All right, quick audio check for those listening online. Okay, good. Audio is good. Audio is okay. Thank you very much. Let me just launch my. All right, Monday, August 24th, 9:18 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com. Thank you for coming in person here at Win Lifetime or any of other offices, Trinity Drive, Vancouver, Calgary, or wherever you're joining us. I'm your host, Rafay, and I'll be with you for the next 2-3 hours, hopefully until I plan to sit until 4 p.m. So I will help you understand the market, navigate, and we'll find some opportunities along the way, and we'll see which way the market goes, and then we'll go along with it. Anything I say here is not financial advice, just for informational, educational, entertainment purposes only. I don't move the market, I don't control it. Just like you, I have the access to the charts, and then we're trying to find the best possible entries looking at the analysis tool in front of you. And all right, first thing is first, let's look at the news. If there's anything scheduled, you have really one speech that's happening at 2 p.m. Nothing crazy. Yes, tomorrow and Friday is important for this week, but that's about it. Earnings calendar this week, today, nothing tomorrow. So Nvidia. So the biggest news of this week is your August 26th, 4 p.m. You will have Nvidia open up their mouth. $5.2 trillion company. So keep an eye on Wednesday. Nothing to worry right now, but so that is our news out of the way. Let's look at some numbers. Now, when we left on Friday, I had written a number that if price gets to 140 to 150, you should go long, and most people did. And from one, it came down as low as 116 and then shot back up. Some people got 10 points, some got 20. One person got 100 points out of this. So
This number was written, and this is done now. So now we'll write new numbers for today and analyze it. Let's see. So August 22nd, and we'll write new numbers for ES. Let me just quickly analyze to see where is. Sorry, 20. Then I guess it's a 24th. All right. So these support numbers are done, and which you want to keep one on Zoom and one on. Okay, this we'll keep it on the board. So this support is done today. So resistance 520 did not come at 620. So let me write down. So night high is 480. Yep, night low is 116. So $364 move. Pivot is sitting somewhere around. Where's my pivot? 340, 338. Okay. Yes, 7703 high, 7664 low, $39 swing since 6 p.m. Where's pivot sitting at? Pivot is sitting somewhere around 7690, and value area top 7704, value area bottom 7685. Okay. 7685. Let me post that in the Telegram group to make sure everybody gets it as. Okay. That is done. And the news for today, August 24. Earnings and news. Okay, that is done. So what level is done? We're sitting between R1 S1 for ES and between R1 S1, and we are sitting very close to S1. And let's see. So what do I want to do? Because the range is so low, maybe, let me see. We do have pivot sitting as 60-minute equal high sitting at R2. So the first level of resistance would be somewhere around R2, and that is our night high as well. So night high and R2 today falling within the category. Okay. R2 and so 480 seems reasonable. So R2, so let me write down equal high. So 470 to 480, 29,470 to 480 after 945. So so whatever happens after 945, because I want to see kya hoga. So 29, let me write this down. So 29, 470 to 480, hit and run 10, 12, 15, 20 points should be okay. So that will make it from 205 right now to 400. So almost $300 difference, right? So let me see what else we can do for support, because support is night low. So 28,000. I want to break S2. 28,910. 28,910 to 920. That is my first support. So below S2. So slightly below S2. So 28,910 to 28,920. So these are our long numbers for, so not immediately at S2, but below, very close to expected low. That's the plan. So 910 to 920, we will go long, and which is expected low of today. And then I'm planning to go short. R2 is fine.
and then we will decide above which way it goes. So that's our equal high on 60-minute. And okay, so that, let me change the numbers for support and resistance for ES. Let me calculate ES at the moment. And of course, retracement divergence. Let me see if we can get something that going. Nothing happened. So I think we had only since 4 o'clock, we only had one mid band, went from high all the way down to lower low, from lower low all the way up to higher high, and then nothing, no retracement divergence trade happening at the moment. 77.15, of course. So high to go low is the plan. Yeah, preferably pressure down, just stay in selling. Base down means just where the price is opening is below pivot. So our pivot is 39,340. So right now it's below. So pivot acts like a starting point. So if its base is down, the chances are it will go down. The chances are not. Any news, anything can switch it, but so yeah. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar, Sat Sri Akal. Hello, guys. Game show. Microphone check. If you can hear me, guys, microphone check. Good morning, sir. Ji, good morning. Nielsen, good morning. Vikas, good morning. Hitesh. Manjeet ji, absolutely right, ji. Always good, ji. Always good. Amir, good morning. Amrit, Abbas bhai, Rizwan bhai, walaikum salam. Tariq, good morning. Manish, Manpreet ji, good morning. Thank you, Hitesh. Alpaji, good morning. A quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our charts are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. And we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. Today, S&P 500, NASDAQ down, Russell 2000. Base is down, pressure is down. S1 is done for NASDAQ, S&P very nicely bouncing back from our S1 area early, around 8:30 a.m. A very nice, beautiful push to the downside, hold by S1. Right now, sitting very close to our night session high area. So night session high is expected, and also today no news means 2 o'clock we have Treasury Secretary speech. Nothing going on. This whole week is normal, but only 2 days are very important. One, it's third Friday of the month. Third Friday of the month means this Friday is very, very important, and we have so many news on Friday and Wednesday. Means today, tomorrow, and Thursday will be a normal, smooth day, but 2 days we'll see maybe a volatility. That is our third Friday of the month, means that this Friday and our Wednesday will be very, very important. Today, S&P 500, our high for the day is 77.26 to 77.40. Low for S&P 500, 76.30.
to 76.16. NASDAQ, our high is 29,600 to 680. Low is 28,900 to 28,810. And best is high to go. Low would be a good strategy. And low is expected also. From low, you could pick our expected low, nicely pushed to the upside. So overall, we have S&P 500. Friday went up 56.25 points. Now a retracement to the downside. 49.5 points came down. Hit S1. NASDAQ Friday 336 points and not retraced. We have an extension on NASDAQ, means NASDAQ is taking everything to the downside. Dow is opposite, Russell is in the sink, S&P and NASDAQ are sync. Night session low, done for NASDAQ. S1 is done for the NASDAQ, and right now it's pushing further down. Dow went up 606, retraced nothing, 34%. Same thing with the Russell 2000, 33 points, and came back. The Russell 2000 is in doldrum, not giving us a big swing up or down, but S&P, Dow, and NASDAQ, S&P, Dow, and NASDAQ moving exactly by book. Went up, retraced down, and right now sitting at night session low. Dow is opposite. Dow hit our night session high, guys. Exactly hit our night session high and trying to break actually night session high area. And then euro at 3:30 a.m. when our euro start, British pound euro both just tank, very nice, push to the downside, went to S2 area, and 100% British pound recovered that push to the downside. But our euro is not. Euro just went up 70%. But both are sitting below a PP area. One midband is green, British pound midband is green, and the euro midband is magenta. And right now, just it's below a PP area. Canadian dollar opened with the gap. Yesterday, it opened with the gap and did not fill up the gap and shoot to the downside. Expected low for the day is done for our Canadian dollar. Canadian dollar, our expected low done. And that's why you see Canadian dollar is bouncing back up. Night push, it almost covers up 40%. I would say 38% push to the upside. But because of our S3 and expected low, both are sitting at same place, and that's why Canadian dollar just slightly it's bounced back up. Crude oil is down. Crude oil actually came down $2.82. Friday it went up $1.82. It came down and gave us a lower low. So remember, we are in a retracement on crude oil. So crude oil went up 55%, means $1.55 out of $2.82, and this is a retracement, 55% push to the upside. And right now, sitting at PP, just slightly above PP area. FDAX at open 3:30 when the British pound went down, euro went down, FDAX went up, and now British pound is bouncing back up and euro is bouncing back up, and our FDAX is going down. So FDAX came down right now below PP area. Gold is up. Gold is up, a very strong push to the upside, $230.30 push to the upside. We might see our expected highs somewhere. Keep eye on 47.80, 47.80, 47.75. This area would be a good area to get out from your long position, because gold Friday went up to our expected high. If you remember Friday, gold, our expected high was somewhere 80, 83, 46, 46, 83, 84, 85. I can't remember right now, but it hit and bounced back down nicely, and then extension to the upside at open. Even Sunday open, we have a very nice push to the upside on our gold. Right now, very close to R2 area, our R2, the areas we have posted. And copper is up. Copper is the very strong push to the upside. It's showing a retrace and extension. Actually, we are in an extension to the upside on our copper. And right now, above R2 area,
Silver is up. If you see silver, very close to our Friday high area. So silver went up $4.32. Crazy push to the upside. On if you see Friday swing high $4, that is almost $23,000 in just if you pick the low of 11 a.m. Friday and sorry, no, Thursday, Friday, Thursday 11 a.m. to Friday exactly 9 a.m. We have almost $23,000 push to the upside on silver, and came down at 38%, some $1.66, and then bounced back up $1.50. I'm talking about uh, evening hour around 11 o'clock, 11 p.m. till now, and still silver is pushing up. And right now, natural gas is very, very strong push to the upside on natural gas. Hit our expected high 83 cents, $2.83, 80, I believe 82, 83, 84 cents. And look how natural gas is coming down from our expected high for the day. Exactly hit our expected high. While we were sitting here, natural gas was at 77 cents and went up, hit our expected high, and right now it's bouncing back down from our expected high. And Bitcoin, crazy push to the upside on our Bitcoin. So far, we have $15,500 push to the upside after August. I'm talking about 19, August 19 till now, 15,500, so $79,635. That's a beautiful push to the upside at R2, R3, actually very close to R3 area. And we might see our expected high for the day will be done on our Bitcoin. And Ethereum, $664.50 push to the upside. August 19, same August 19, we have this push to the upside. And that's a big push to the upside in 3 days. That's 666, big push to the upside. Right now, Ethereum is at R1 area. Further, yes, very close to expected high, 2,540 or 50, I would say. That would be our expected high for the day for our Ethereum. S&P again came down, hit our night S1 area and very close to our night session low area. And NASDAQ break our night session low and heading towards our S2 area. Please, guys, both way, high to go low and low to go high would be a nice area for us. Um, yeah, and S1, keep eye on S1 and striking price. Keep eye on striking price on all of these markets. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. First retracement diversion is done. Price came top of the bar, gave you full 5 points. So I'm waiting for price for NASDAQ to get to 28,910. 28,910 to 28,920. I know I'm skipping S2, just saying that it could establish a range first. But if you took a retracement diversion 30/20, price came to the top of the bar, you're done your first retracement diversion right here. So this has given you full 5 points. So very close to S2 for NASDAQ, 66. Hopefully it'll go to expected low. So 28. If anybody wants to take a risk at S2, absolutely. No, just make sure that you put a stop loss in, and because we are heading into S2 for NASDAQ very soon. 28, 9, 9, 10.
इधर आ। ES is inside second retracement average, top of the bar. That's almost has given you 2 points. NASDAQ came as close, only 20 points away from S2. So NASDAQ going down, ES is done, second retracement divergence, almost halfway the bar is done. In any time, we'll be inside S2 for NASDAQ. NASDAQ is going inside S2, and your second retracement divergence, top of the bar, is done. 2 trades are done, if you took. Now don't take a retracement diversion because this will be like the third mid-band on 1510. So if you missed it, you missed it. No, वो हो चुका है 2 दफ़ा. Next would be the mid-band, first attempt. So we are inside S2 right now for NASDAQ officially. Okay. If it breaks S2, that's what we want, and go down to 29,910. All right, it has broken S2. Coming to our area of interest very soon. हाँ मीन वहाँ पर कुछ रुकना चाहिए ये इसको 45 के इर्द गिर्द ना S2 के बॉटम पे 60 मिनट इवन 48 से भी सही है बट 45 आइडियल है. So I had skipped S2 and now hoping that
964 minus 910. 54 more points. If it drops, then I will plan to go long if it goes there. It only went to 964. So we're finally in the 28,000 zones after long time. मैं सर 910 से, क्योंकि हमारा पिवट है 907, तो 910 से रिस्क लूंगा. All right, Trump just posted that Canada, we hate Canada. So look at the Forex factory. On January 1st, 2027, tariffs on cars, trucks, auto parts to 50%. So it's okay. Oh man. वो भी जाना वो हमारी तरफ आ गया. Pistolen, they went from 953. So 330 points from the open, it just fell. The moment, it's just crazy. First mid band 30-20. Let's see. Does it give us anything? Did? Okay, I didn't see it. Sorry. 2 points or 4 takes 1 point. Okay, it's okay. It should. So if anybody wants to sell, mid was first, VIB is second, and equal high somewhere around 81 is your selling point. NASDAQ, now I will lower my standard from 470 to pivot. So because it's come down so far, so R2 now is too far at the moment. So as the price drops down, my resistance to the next level goes the 29,953 was the number. How we were 50 points away to take an entry. All right, maybe this is the second attempt now. 29,338 minus 29,012. 312. It's lifting up from S2 now. If you took the bottom range of S2, it went against you 50 points, and it's pulling back up. Top of S2 just touched. For anybody who entered S2, gave you an opportunity to exit at a break even for NASDAQ. If you took S2 and then you were thinking that, but it gave you a break even exit. Top and bottom both. Bro, 11 minutes ago, Trump tweeted, my God.
270s. Asia low. This time came bottom of the fib. Okay, one more time. ES45. If you want to take a risk, nothing before 45. So $400 divided by 76.45 bottom है बेस्ट टू वहाँ से रिस्क मैं स्टार्ट कर सकता हूँ so divided by 27 this is almost $15 मूव चल रही है यूएस और NASDAQ की so if 28,970 minus 910 that's 60 divided by 14 5 point मूव होगी yes If it breaks 53, most likely we're all right. 48, so it's coming to our area of interest very soon, guys. All right, let's get ready. 910 से 920 कहीं ना कहीं रुकना चाहिए उसको. Top of the expected low 907 से हमारा area शुरू हो रहा है. Actually, area शुरू होता है. I believe. Area 900 से शुरू हो रहा है, right? So अभी S2 और S3 के दरमियान में है. हमने संडे नाइट को कैलकुलेट किया था 28,850 ये आइडियल नंबर संडे नाइट को कैलकुलेट किया था लेट्स सी और ऊपर का अगर जाता है तो राइट नाउ इट दिस टाइम अराउंड इट वेंट टू 947 हाँ जी तो ऊपर का 950 अच्छा ऊपर का तो 950 रीजनेबल रहा है अगर यहाँ से 950 से बाउंस कर गई 30 पॉइंट मैं उल्टा लिख गया था उस दिन आई डोंट नो के ऊपर 950 था नीचे नीचे 50 ठीक है so it did give us quite a few points from 950 now if it pulls up I'm even thinking 250 260 like वो इतना दूर रह गया 470 तो यहाँ से 4 तो hit and run maybe the 30-minute candle equal low hit and run top bottom of S1 if it goes back up I'm just looking at the YouTube what did I write all right, five more minutes and then your half an hour candle will so since the open price came down $300 instant for NASDAQ.
296 divided by 2, 148 plus 28, 947. One minute mid band should act as a good resistance. वहाँ पर अगर MNQ चली गई और ये कितनी आपकी, yeah, so it should, because that's a 50% move back up. So 296. So I'm just looking at where do I want to sell if it goes to top, reverses to back up again. So I know I want to go long from 910. I'm just calculating where do I want to go short from. So started at 470, brought it down to 350, brought it down to 270. Now I'm thinking, लेकिन स्टार्ट तो किया था R2 से, अब वो इतना नीचे गिर गई है कि R1 से भी नीचे आना पड़ेगा. All right, 1 minute fib is there. So 10 o'clock move is almost there. 50% will push it somewhere around top of the red box, and 1 minute mid should give you some hit and run. All right. Hello. Hello. Yes, hi. Yes, hi. Yeah. So I picked up one on the Friday. Yeah. So I just need to pick up the second one. Yes. The big amount, 5,000. Now it's yes. Yeah. No problem. They said they will redo it, so I'll come back next Friday. I mean, this coming Friday. Yes, 688. No problem. I don't know. They said some request was wrong. Yep. No problem. No problem. No problem. Thank you. All right, we're heading back. So far the 30% retrace is done. What the NASDAQ went down. So 1 minute mid band first time should give us something, hopefully. No, 30% only retrace. Hopefully this time will break 47 and give me 910. By the way, मुकेश भाई ने कल रात अकाउंट उड़ा दिया और फिर 2 और खरीदे, वो भी उड़ा दिए. तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसलिए वो ऑफिस में नहीं आए. हाँ, कल उनका वो चले गए थे, डे नंबर 4 था, पहले दिन 500 हो गए थे. तो कल मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा पास कर लिया होगा, तो कहते हैं कि एक और लेना है. अपडेट ये है. सो come on, give me something.
Go down, make a divergence at 9:10, and just go back up. $9.77. Let's see if it breaks 947. That's what important is. Back into S1, S2, sorry. $9.75. 909.
So the number to watch is 947. If it goes below, then we're going. Until then, there's no trade for me. It's coming back, 970. Let's see if it breaks. That will make the swing almost 335 plus 40. $375. 974, 970. It has to break 962, then 947. Previous equal 960 is broken, 62. All right, come down to 910. Only 60 more points. Equal low, bounce back up. So again, we'll do the same thing. Somewhere around 910 we will enter and we'll observe the situation. If it goes against us, if it gives us 20 points, we're out. But if it gives um, against us, we'll see when to do another average and how to. Because it will go to 28,700. Just saying. Daily has a box and a weekly has a box, so there's a potential where I'm seeing the lowest it can hit is 750. So if we enter 910 minus 750, that's $160 move that can potentially happen because daily has a blue box and a green box. Maybe today, maybe tomorrow, but it's trying to get into daily 700 or 750 zone very soon because the bottom of the box is 750. Zoom in a little bit around. Yeah, 760, 750. And then next supports will begin around 27,200, but may not happen today. We got lots of room to get to the green box. The moment we want 910, give us 20 points, hit and run. It's 240, yeah, daily. Coming to our area of interest soon. Hit and run from 910.
Does it break 947? Not yet. Now these prices are July territory. We're starting to go a month back. So mm, 28,950 minus 29,116. 66. Went back. I see one more retracement divergence going in the favor. So this current bar on 3020 did hit top of the bar. I think 2 points were given or four? Okay. Almost full candle got filled. Well, not even one mid band got tested on 1 minute. So this was almost second attempt, did not go.
So now I'm waiting for S1 bottom. If it's going back up from 950, so the number I'm waiting for is 116, 116. So if it goes there, then I'll decide something. So NASDAQ, because it did not go to the number I wanted, 910, is pulling back up. So waiting for 116. Why 116? It's the 30-minute equal low, and yeah. So let's see. And a 60-minute equal low should be there as well. First time 1 minute mid band touched and gave us 5 points. Twenty-nine zero 28,906.
Mid band for 30-20 worked. Come on, give me some direction.
All right, so I'm now preparing S1 bottom. If price goes to 1110, 116, then I will be selling because it's not moving either way. It's not going down to 910, but if it's going back up, bottom of S1 should be reasonable for 10, 12 points, so we get in somewhere inside. So सेलिंग जी सेलिंग के मीनिंग 116 पे आ गई ना, वो हमारी 30 मिनट की बॉटम ऑफ द बार है. तो 116 से कुछ हिट एंड रन लेंगे हम, 10 पॉइंट 15, लेट्स सी, because of course it did not go to your 910, so we are hoping that once it gets to 29,110 or 116, I will do a hit and run. So as the range becomes shorter, I'm trying to pick a trade from the optimal price. So that would be the bottom of S1. So in plain English, if it goes to 116, I want to sell. If it goes to 910, I want to buy. So let's see which way does it give me. Any idea? Because from 28,947 minus 29,110, that's $163 move. 296 minus divided by 2, 148, 148 plus 28,947. Yeah, 110 is. And which is London low, of course, the Asia low. The price is pulling back up. हाँ जी, यस, थोड़ा सा वो ऊपर है. मैं 116 है प्राइस आपकी एशिया की लो की, तो मैं ज़रा 110 से आपको हिट एंड रन के नंबर लेने हैं, तो वहाँ से बन सकता कुछ. So that would be considered high to go low. Price is going high. Now I want to sell. Now you can go start to buy bottom of the bar. Retracement ever. High शुरू हो गया है, but issue ये है कि 30-20 थोड़ी consolidation में चली गई है, 5 up. So let's see if it breaks. All right, we're getting close to our number again, 65. Yeah, no. अभी high के bottom से buy करना है ना. Yeah, so we will buy from the bottom. हर retrace. All right, 67. So 335. 167, 29, 28, 947 plus 167, 140. बिल्कुल सही है जी number. Hopefully, it'll give us some points. 71, 72,
81. 84. 95. Come on, yaar. No. अब वो 96 से वापस आ गए. It's okay. Still haven't given up. Maybe it'll touch 35 and go back to 110. You never know. News. एक सेकंड जी. अब वो really scheduled to 2 p.m. है. ये टैरिफ्स कैनेडियन वाले था. All right, let's see if it jumps into the 110 zone.
Anywhere. All right, hopefully one more time. 98. 105, 106. कुछ पिक हुआ जी? मेरे कुछ पिक हो गए. 'We're kind of done. Trade is done. नहीं वो 110 से मैंने कहा था ना एक टिक से रह गया तो 110 116 अभी तो वेट कर लें अब दोबारा जाते हैं. नहीं आई नो मैं उसके बिल्कुल बॉटम पे एक ट्रेड पे बैठा था तो वो S1 के बॉटम से हो गया. मैं उसको अब मैं 122 पे लगा रहा हूँ 110 वाला. निंजा के S2 पे कोशिश कर रहा हूँ. हाँ जी. ओह थैंक यू जी थैंक यू. अभी तो 12 भी नहीं बजे. That's okay. ये 116 नंबर था. मैंने कुछ ट्रेड 110 पे जाके लगाए और वहाँ भी पिक हुआ. मैंने मार्केट दबा दिया. So got me something. So we can do a reattempt maybe 120. वो निंजा के पिवट से थोड़ा सा नीचे अगर 110 वाला किसी का पिक हुआ या थोड़ा किसी ने नो नो वरीज. एक टिक से रह गया 110 वाला. So no worries, no worries, no worries. We will try to figure something out somewhere around 122.
Heading again towards S1 bottom. Actually, I moved my order to 142, upper range of S1, upper range of S1. This could break through, so I don't want to have a risk. So 142. If you want to take a risk, wait for 140. तो 122 का रिस्क उठा के मैं 140 पे ले गया. That's where the equal low is for 15 minutes in the morning. So I will not enter a trade before 140. Hit and run another 10 points because it went as high as 110. It could break 110 and let's see. All right, we're heading back inside the S1 zone. One more attempt at 110, very close.
ये तीसरा है, तो अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो ब्रेक करके फिर मैं 140 पे चला गया. Okay. सर अभी कोई तेज आई था, बस उसको कहने की दूर है कि वेट करें. वेट. हाँ. I think NASDAQ is scared of us. No problem. Yes. If somebody must buy for 1 minute MNQ, 1 minute. That's the first attempt where it's going from bearish to bullish. For scalping, 5 points, somewhere around 60 is your entry. So if in a slow market where it's maybe by 11 o'clock it'll pick a direction. So far it hasn't. I'm still a big believer it's gonna go to 28,700. And 1, 2, 3 वहाँ पर boxes आए हुए हैं. So let's see. So far, I've only taken one trade worth 10 points. That's it. That's only one trade worth 10 points. So hopefully from only feel bad would be that if it stops at 122 and comes down, then I will say, oh my God, I missed but because this is the third attempt to break the Asia low, which is 116. So don't worry, if it goes towards S3, we'll buy. If it goes top of S1, we will sell. Started the day with 470, brought it down to 408, brought it down to 330, brought it down to 208. It wasn't. Now, this was my first attempt, and now I'm sitting at 140. 30-minute equal low. Very close to, sorry, 15-minute equal low as a resistance.
Let me see how many people are sitting around 140 zone. So I do know the live markets as well. So 140, you have how many people sitting? The biggest, yeah, about 60 to almost 100 orders are sitting, live orders that they're waiting for that. 140. So 139.75, 120 to 140, lots of orders. And at 140, almost 1,000 contracts got traded at this price already today. 140 पे जी हाँ जी S1 का जो top है. So this is a service. I pay $40 a month. I can scan any number, and you can say where the live orders are. People are placing an order. Now, what it doesn't tell you are these are buy stops or sell limit. Two different things. People are waiting at 140 to break to buy or 140 to sell. That it doesn't. All it says is right now I have 100 and at 130, 40 people are sitting. At 140, you have 60 people with the live order. Anybody doing lucid, take profit, funded, none of your orders go to. By the way, retracement diversion is done and mid band is done. If your price came from higher high, I believe there's a wick here. Yes. So this means that your 5 points are about to be done. Background is green, price is coming from higher high, jump in with 3.75 stop loss, that's it. So right now, again, it's stuck in a 1 minute chart. If you see, it's just going up 10 or 15 points, nothing major. So we'll wait at 29, 28, 9, 10 and 29, 140, somewhere in between. Let's see. Boxes are there on 1 minute. If you see on MNQ. And I only trade either 60-minute ES, which is my area, or 30-20. I don't trade 15-10 at all. Too many charts to watch. Let me just scan the book. Where are the most buyer zones in buying? हाँ जी sir. हाँ जी. Yeah, but that's only the level of market is only 20 numbers. So with the $40 a month, you can scan the whole book. If you pay 40, you can ask me a number. नहीं नहीं निंजा ऐसे नहीं मिलते ये आपको मिलेंगे बुल नॉक्स में आपको मिलेंगे रिदमिक से क्योंकि निंजा आपको सिर्फ देता है लेवल 2 का डेटा आपकी जो बुक की डेप्थ है ना मे बी 20 पॉइंट्स अप एंड डाउन लेकिन अगर मैंने जाके देखना है कि यार कहाँ पर बैठे हैं अगर S2 के अंदर लेना है सो जिस तरह 28,950 पे 71 लोग बैठे हैं राइट सो निंजा ट्रेडर बेट आपको बुक वैल्यू बड़ी नहीं बता just another $40. It's a tool. You can pay as many tools out there. People pay for order flow. People paid for book map. Unnecessary, in my opinion. It's just let's see. 11 o'clock. You have a bit of a. I think it's reversal to the down. Hopefully. So it's heading down now. 11 o'clock is some sort of a reversal. Always from 10:45 to 11 o'clock, 11:15, you have a reversal.
Hopefully now it has enough energy to go to S3. One minute mid-band gave you guys 5 points, almost. Oh, Daniel here? Daniel left? Oh, okay, no, I was just asking for a quick. No. Yeah, he was here today, but he left. You want light, man? No. Sure? Okay, no problem. मैं क्वेश्चन टेक्निकल पूछना था, शायद आप बताएं। 60 मिनट की डाइवर्जन अभी बनेगी, ठीक है, 47 को तोड़ेगी, ठीक है। आपकी ओपिनियन में वो क्या देखें, जैसे ही 43 कैंडल बाद वो कन्फर्म, देखें 47 को तोड़ती है तो 60 मिनट पे डाइवर्जन बन जाएगी, राइट। तो आप क्या वैल्यू रखती है? मैं 9-10 पे बैठा हूँ। अच्छा, NASDAQ। और भाईजान पता कहाँ जाना है? 27,200 पे बॉक्सेस 1 मिनट में, 1 मंथ में और 1 वीक में आए हुए, इसीलिए मैं सेलिंग में रह रहा हूँ। अभी मैंने लिया था, मैंने एक टिक से मिस हो गया। हाँ, S1 का, लेकिन मैंने वहाँ ना मार्केट दबाना पड़ा, क्योंकि हुआ ये कि वो 110 पे लगा था, वहां से भी नहीं पिक हुआ। मैं कहा यार घुस जाओ, 10 पॉइंट लिए टिक। अब मैं बैठा हूँ 140 पे, थोड़ा सा चल आवाज एको, और इधर से कन्फर्मेशन ले लिया करें। आपको वाटा क्यों चाहिए? अच्छा, जिस तरह मैं यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेड, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाएं जी। पूरी कोशिश। और भाई हल्का फुल्का समझ आ रहा है? बाई सेल बाय, ठीक, प्लीज ताकि एंट्री डालनी तो शुरू करें ना। आजा भाई नीचे आजा। अभी सेलिंग ना स्टार्ट कीजिएगा 30-20 में, अभी ये रिट्रेस है उसकी। फिर टॉप ऑफ द बार, वही रूल है। नहीं बिल्कुल, अभी ये देखें, ये अभी यहाँ से लोअर लो बन जाएगी, एग्जैक्टली यहाँ से सेल स्टॉप करके ब्रेकआउट, ये तोड़ गई तो लोअर लो बननी शुरू हो जाएगी।
इसमें डाइवर्जेंस नहीं है अभी, 30-20 में नहीं है। हाँ वो वहां से रिट्रेसमेंट अवर, अगर लेकिन लोअर लो बनने के बाद So where am I waiting? Somewhere around here. 60 मिनट में थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। एंट्री बस चार्ट को देख के लीजिएगा, चार्ट के नहीं स्टॉप लॉस आप लगाओ इस नंबर पे, दैट्स जो भी आपको फील हो, कोई बात नहीं। अगर जीरो है ना वो भी अच्छा है। हाँ मैं जीरो ज्यादा अच्छा है नेगेटिव से। एक क्विक क्वेश्चन पूछो, लाइव कितने का है अकाउंट? मेरा छोटा ही है, 1000 का भी होगा ना। एम कीजिएगा $50 से ऊपर नहीं जाना। मैं ही आपको एक मैथ दे रहा हूँ, अगर आप $50 अ डे डालेंगे ना माइक्रो से, तो महीने बाद $1000 बनाओगे, तो परसेंटेज पे जाएगा। $50 का मतलब $1000 पे आपका बनता है 5% डेली। ठीक है, कोई दुनिया का बैंक आपको 5% डेली नहीं दे रहा। आप 50 तो बना सकते हैं आसान से, 2 माइक्रो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 2 माइक्रो में देखें, 2 माइक्रो में $50 का मतलब है आपको 5 पॉइंट चाहिए पूरे दिन में। तो आप अगर उस विजन से देखेंगे ना कि मैं $1000 को रोज के $50 ऐड कर रहा हूँ, 25 कर लें, लोग $25 ऐड करते हैं, अगर वो 25 भी ऐड करें तो एक महीने बाद $500 ऐड हो जाता है। ठीक है, अकाउंट साइज छोटा है
तो $25 का मतलब है आपको 2.5% डेली मिल रहा है इस मार्केट से। चलते जाओ करते जाओ, 1000 से 2000 हो गया, फिर अपने थोड़ा सा बढ़ा लो, 2 से 3 माइक्रो चले जाओ और फिर अगेन वहाँ $100 डेली डालने शुरू करो। तो 1000 के अकाउंट में एम करना है $50 अ डे, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि होगा ये वो जाएंगे आएंगे तो चलो मैं इस वजह से जो भी लाइव करता है उसका गोल ये होना चाहिए 1% डेली, दैट्स ए मिनिमम। $1000 का 1% बनता है $10। तो अगर आप 2% ले रहे हैं, $20 2.5% ले रहे हैं, तो इस तरह रीजनेबल। एट टिक्स पीछे, 10 टिक्स पीछे जाना होता है। 10 कि अगर आपने ऑटो ट्रेल 10 से पीछे चलता है, क्योंकि उसको ईएस में इनफ बफर नो कि इट नीड्स टू बी यस बहुत करीब लगा लिया। तो या तो आप टीपी लगाए ना कि मैंने 3 पॉइंट लिए बाहर, या आप लगा लो टीपी बड़ा लगा लो, 15 पॉइंट का लगा लो या 10 पॉइंट का, और जैसा ही 3 पॉइंट नजर आएंगे वो एक लॉक कर देगा। 4 नजर आएंगे 2, क्योंकि अगर वो मिड बैंड चलता गया तो व्हाई नॉट। बॉटम ऑफ द बार अभी ना ब्रेकआउट बना ना कोई बॉटम। All right, heading back up again to break our, let's see 110 को ब्रेक करता है कि नहीं। नहीं मैं 140 पे जी। लाइव में मिनी ना जाइएगा मिनी गया तो $1000 है, फिर भेजना बैंक पहुंचना चाहिए। एक लाइव रख लो, दोनों कनेक्शन, एक फंडेड है, अगर दोनों थोड़ा आइडिया फंडेड का सिर्फ ये है कि आपको मैनेज करना आ जाए कि अगर 1000, देखिए आपको $60 में से 1000 अगर मैनेज करना आ गया तो आप लाइव भी वैसे ही करोगे। ये आइडिया ना, मुझे फंडेड तो उन लोगों के लिए जो जरा जिस तरह मुकेश भाई तेज भी चलते हैं, निकाल भी लेते हैं। सिर्फ आपको डे 1 में मैं लाइव में नहीं ले जा सकता, बिल्कुल ग्रेजुएट किया है तो $1000 का $60 का अकाउंट, क्योंकि सिम में उतना नहीं फील होता। अब आपको 20-30 बनाने आ गए माइक्रो से, तो आप लाइव चले जाओ। नहीं डे 1 एवरी, मैं 5 साल के बाद मेरे यहाँ हो गए हैं टेक्निकली इस रूम के अंदर 200 टाइम्स, 200 एक साल का दिन होता है, 200 एवरेज 40 दिन छुट्टियां और 200 टाइम, मुझे 1000 दिन हो गया। आज भी बैठता हूँ ना तो मेरा डे 1 नहीं है, पीछे जो हो गया आई एम जस्ट लुकिंग एट इट टू सी
where I can take a trade. So it doesn't. अब आपका ब्रेकआउट होने वाला है इधर ऑलमोस्ट, और अब आप टॉप ऑफ द बार सेल करना शुरू कर सकते हैं. टॉप ऑफ द बार मीनिंग आपकी एंट्री यहाँ लगेगी समवेयर, मिड भी वहीं पर आ रहा है और टॉप ऑफ द बार ये लगेगा आपका सेल लिमिट. 5 पॉइंट मिनिमम मिनिमम अगर आप बेशक नहीं ठीक है, लेकिन अगेन मैथ ये है कि अगर आप सिर्फ 2 लेंगी, अगली दफ़ा 3.5 चले गए, मसला है. मैथ किया हमने पूरा वीकेंड पे, आपको बताया कि 3.75 दे रहे हैं. अब लिखते जाओ कि 50 दफ़ा आपने ट्रेड लिया और 3.75 दिया, और लेने पूरे 5 पॉइंट है, अदरवाइज आपका डेफिसिट रहेगा. होता ही है कि चले आपने पहला 3.75 लिया, वापस कर दिया, दूसरे में सिर्फ 2 लिए, तीसरे में फिर 3.7 दे दिए. तो एम फॉर द होल बार 5 पॉइंट्स. आज आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स 5 बार पूरे चले. आई डिड नॉट सी, आई थिंक 3 टाइम्स तो जरूर चले. तो अगर 3 पूरे चले तो आपके 15 आ गए, और अगर 2 खराब भी हो गए फिर भी आप नेट पॉजिटिव 10 पॉइंट्स हो. तो अगर आप ले ही रही हो सिर्फ 2 पॉइंट, तो दैट्स वेयर ये आई नो वो पता क्या कर रहा है, वो वहाँ बिठा लेता है. वो आपको लगता है कि 2 ही आ गए हैं, जैसे ही ट्रेड डालें मॉनिटर नीचे करके उसको देखना छोड़ दें. राइट, सो नो वरीज, कोई बात नहीं, इट्स ओके. फिर दिस इज मे नॉट बी द राइट बिजनेस फॉर यू. राइट, सो नहीं, फिर एरिया खेले ना, वेट करें. आप जब एरिया बैठे रहो बैठे रहो. मैं एरिया में देखिए नंबर दिया हुआ है ना कि लेट्स से अब 140 पे नैस्डैक आ जाए और ES 7710 पे आ जाए. Until then your whole day you will sit and 23 घंटे 23. संडे को कल वो भाई मेरे साथ बैठे थे, हमने एक प्रिसाइज मैथ निकाला था कि 28,950 पे आ जाए तो हमने बाय करना है. मैं रात को ऑर्डर भी लगा के नहीं आई, प्राइस आई अभी मॉर्निंग में आई, और 950 से थोड़ा सा हमने उसको और नीचे कर लिया. मैंने 40 पॉइंट नीचे कर लिए, 950 से 910 पे चला गया. पर 950 पे डॉट टू डॉट आके उसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दिए. राइट, सो और उससे पहले 140 भी था एक्चुअली. सो एरिया 23 आवर चलता है. अब जो हम बैठे हुए हैं अभी भी एरिया पे बैठे हैं. हाँ 60-30 मिनट वाला. सो लेट्स सी. नो मेरा एक सेल ऑर्डर लगा हुआ है 140 पे, एक बाय ऑर्डर लगा हुआ है 910 पे. दैट्स इट. बैठा हूँ बैठा हूँ बैठा हूँ बैठा हूँ बैठा हूँ. नो प्रॉब्लम. इक्वल लो की तरफ आ रही है, 43 है.
We're back into S2 very soon. 910. No problem, G. 29,140, 28,910. All right, coming back up towards S1. दो टिक्स हो गए, स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया अभी? हैं? It can't be. The bar came down. You didn't move it. Actually came down. No, no, I know. पर मैं कह रहा हूँ अभी भी स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ. 3.7 15 का होना चाहिए, लेकिन ग्रीन दिखाया इसमें. I didn't see it. No worries. 15 टिक मैक्सिमम है इसका 3.75. NASDAQ pulled up, ES pulled up again. So for those trading NASDAQ, now we sit for 139 is my range. Now if you want to sell fib, mid, अच्छा top of the bar तो अभी मैं trade में हूँ. Next is fib, next is equal low of 74.
ES का दूर है बहुत, 7710 बहुत दूर है अभी। यहाँ जजमेंट कॉल है, जजमेंट कॉल है कि ठीक है अब मेरे थोड़ा सा ज़्यादा दूर चले गए ना, ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन हूँ अभी मैं, सो यू कैन से ऑलराइट मैंने यहाँ से एक ही पॉइंट 4 टिक्स नज़र आए हैं, यहाँ लो ठीक है, वो अब वो बाकायदा विक बना के नीचे आ रही है, यहाँ मैं एज क्लोज टू एज जितना ज़ीरो भी मिल जाए तो ठीक है। सो फिब ना लीजिएगा, उसको ऊपर जाने दें, मुझे नैस्डैक का सिर्फ देखना है, अगर नैस्डैक 140 पे गई ना तो ये भी चली जाएगी ऊपर। सो अब इसमें जजमेंट कॉल है क्योंकि स्टॉप लॉस अभी नहीं हिट हुआ 187 का, मैं यहाँ क्लोज कर सकता हूँ एज क्लोज टू ज़ीरो एंड एग्जिट, पर लेकिन अगर वो बार के अंदर नीचे जाती रही है तो it has given me 3 points, 3 times an opportunity to close at a break even. So अभी भी नैस्डैक किसी डायरेक्शन वो पकड़ नहीं रही, तो ईएस भी उसी तरह, लेकिन मैं रहूँगा सेलिंग में, अभी तक सेलिंग ही है बिकॉज बैकग्राउंड मजेंटा ही है और स्टॉप लॉस मेरा 187.50 पे है यार, $18.25 75। NASDAQ is heading back and let's see if it breaks 110. So 3 important numbers, 116, 122, 140. So 116 is the Europe low, 122 is the S2, that's Ninja Pivot, and 140 is the 15-minute equal low. So you can pick a number from there. I'm picking 140. Oh man, it went from 137.50. Isn't this annoying? मेरा ऑर्डर लगा हुआ था 140 पे, वो 137.50 से गई है। What do I do now? Must cancel to दो 137 तक चली गई है तो 100 ये ना हो कि 140 को तोड़ दे अब। आई नो जी जतन भाई, what the heck, आई एम सेइंग द सेम थिंग, 40 पॉइंट गई है, अभी सिर्फ बोल ही रहा था कि कौन सा नंबर लूँ, सो आई एम canceling the order of 140 and I'm moving it to 240 249. Actually I can do even 200 is okay, but अब यहाँ नैस्डैक की किस्मत होती है, 140 पे ऑर्डर लगा था, 137 से चली गई और 20 पॉइंट दिए उसने, सो कोई बात नहीं, कैंसलिंग दिस ऑर्डर। Moving it to 238. 238 now, moving there.
मैं थोड़ा सा देखता हूँ, एक सेकंड जरा। हमारा 60 मिनट का मिड में इक्वल हाई 30 मिनट का पड़ा है 248, सो या 245 पे ले गया ऑर्डर में अपना, 29,245 पे ऑर्डर ले गया। Two 45, 29, 245 is okay. That would have been a nice trade, but don't want to risk. So now my trade is at 29,245, exactly, approximately there. Next trade. I canceled the 140. I canceled. So where am I picking up this number from? 30-minute chart, equal highs. And it's actually a 60-minute top as well, 3 candles ago. So yeah, 15-minute का mid खड़ा है 199 पे, but it's okay. $135, $139. It's 480. 29,480 minus 28,950, 532. Actually, 208 could give us some numbers. 208 is the middle between high and low. So the highest is 29,480, lowest is 28,950 divided by 2, 265. So plus 28,950. So 29,208 or 208 to 210 is the mid range. So 29,210 to
215 should be a good resistance. 140 से 8 पॉइंट मिले, but लिए मैं, अच्छा पहली अटेम्प्ट. So the entry is somewhere around, actually 200 से 210 करता हूँ. 200 से anywhere from, oh man, NASDAQ is annoying. Yes, 28 200 से 28 220 तक. So there's multi-resistance sitting. There's S1 sitting. There's the night का prior week का mid का low खड़ा है. आज का mid खड़ा है. There's few numbers sitting at 210. Let us see. Does it go? Because remember, 202 was the number for prior week's low. Let me now go to see how many people are sitting at 202. At 29,200, almost 250, 263 orders are sitting there at 29,200. Slowly combining. $156, so coming to the number that we want. अब मैं नीचे ले आऊँ 200 पे. 160. 165, 166, 67, 70. Come on, a little bit low. 199 से 200 से 220 के रेंज में बहुत ही अर्ली रिस्क लेना है तो 195 से पहले ना लीजिएगा. वहाँ पर निंजा का आपका पड़ा हुआ है S1 195 196 पे. Nothing before that.
180 आ रही है जी प्राइस। वेरी वेरी क्लोज। हम 180 से आगे आ रही है। 175 182 20 more points and then let's see. $185. हाँ, वहाँ से रिस्क आप लगा सकते हैं, तो दैट्स द अर्लीस्ट रिस्क है। फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपेंस। ये 195 202 और 210 ये सारे मल्टी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। 195 पे निंजा का पिवट है, 202 पे मिड है, और 202 लास्ट वीक का लो है, और 210 आपका है मिड आज का। So there's quite a few numbers sitting.
187 टेस्ट हो रही है जी, पेशेंस टेस्ट हो। 188 189 190 195 से पहले ना जाइएगा, बाकी जितना लेट हो जाए उतना बेटर है। सो 193, that will be pain if it doesn't pick up. 195 picked up जी. Let's see now if it comes down. Question now is hopefully it comes down. So I got picked up at 195.75. Now we sit and wait, and hopefully we'll get something. $200. If you haven't entered, wait as much. If you have entered, you just wait. हो गया जी, कहाँ से? 99 से। ठीक है जी, अब इसको वापस आना चाहिए। That's all we can say. We waited. So first इस साइड पे नहीं आती, आप तो ब्रेक इवन पे है, हमें फिर 5 पॉइंट दूर है। $200 वाले 3 पॉइंट ले चुके हैं, 2 और 3 अब जा रही है जी। या वो नैस्डैक जाएगी तो आपके तो 8 पॉइंट आ गए हैं, 8 पॉइंट आ गए हैं, जिसके आ गए हैं जी, 10 पॉइंट आपको मिल गए हैं। ये अब आपकी मर्जी है, ये आपने इतना वेट किया, इतनी जल्दी तो नहीं ना। लेकिन 10 पॉइंट तो आपको मिल गए हैं, 15 पॉइंट, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं जी। हो गया जी, 20 पॉइंट मिल गए हैं आपको। ठीक है जी, क्लोज कर लें, ट्रेल कर लें, सब टू यू। मैं क्लोज कर लिए, मैंने 20 की एटीएम लगाई थी, 195, 20 पॉइंट लेके मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक है जी, डन। ये ट्रेड दूसरा ट्रेड हुआ है आज का मेरा। दैट्स इट। So this trade is done. Either you entered at 199, 195, जितना लेट एंटर हुआ है उतना अच्छा है, लेकिन we did a proper calculations के कहाँ पर NASDAQ जाकर रुक सकती है। Now let's pull up the next number. 215 still valid. 1 second जी, 215 नहीं ना लीजिएगा जी, 215 ना लीजिएगा। अब आपने लेना है तो अगला नंबर निकालते हैं। 1 second, वो थोड़ा दूर है। Next number is 245. 245 से पहले नहीं जी, 245. No, $20 per trade, 10 points. अगर एरिया बहुत ऊपर आ गया तो आप ट्रेड को छोड़ सकते हो। अब लेकिन वो शायद एक घंटा ट्रेड को छोड़ना पड़े ना। एक MNQ $2 का है, 10 पॉइंट मिले, $20 मिले, तो आपने डिपेंड करता है कितने पॉइंट अचीव किए। So now it's going and retesting. So the earliest somebody can enter maybe is 240 to 240 to 2. So this trade is done. We can go ahead and put in the next number of somewhere around 240 to 260, let's say, or 250. Let me just zoom into these equal highs first to see where that number is sitting. अभी तो ये वाला ही ट्रेड चल रहा है, किसी ने तो उसका लेना है ना, सारे के सारे पॉइंट्स।
अभी तो 200 वाले कहाँ जाके निकल सकते हैं, 120 तक, 116 तक, क्योंकि उसने 1 मिनट के मिड बैंड तक आ सकता है ना। ऑलमोस्ट 170.1 वे गई है, 170 डिवाइडेड बाई 2 85। सो लेट्स सी, क्योंकि 1 मिनट को अभी इसने रिवर्सल फुली नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जी सॉरी नंबर कौन सा बोला, ईएस का? ईएस की एक सेकंड, ईएस 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 का हाँ नहीं बिल्कुल आपका बनना चाहिए, कुछ पॉइंट तो मिलेंगे। अगर आपने आइडियल नंबर लेना है तो वो थोड़ा, हाँ अगर आप 90 पे एंटर करती हैं तो रीजनेबल रेजिस्टेंस है। इसको अभी दोबारा ऊपर जा रही है 1 मिनट की कैंडल। 1 मिनट ने अभी तक हमें कोई रिट्रेस नहीं दी 170 पॉइंट के बाद। So let me just double check where is a possible entry. 30 मिनट कह रहा है 245. Let me double check. हाँ नहीं 245 is okay. 245 से 2 it should give us something for sure. हाफ वे से उसने दिए हैं 210 205 से 180 या 25 पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट हिट एंड रन समवेयर अराउंड 240 241 पे ट्राई करते हैं। ये 241 पे जाके 1 मिनट पे लग जानी है डाइवर्जेंस, एंड दैट्स अ गुड साइन दैट प्राइस शुड कम डाउन। Let's see if it breaks 205. 240 से 240 के 50 के दरमियान कहीं से रिस्क तो बनता है। मैं सिर्फ जूम इन कर करके 30 मिनट का इक्वल हाई देख रहा हूँ, तो वो बन रहा है जी आपका 247 पे। सो मेरी एंट्री बनी है 241 पे, पर until 1 मिनट ज़रा 126 तक तो जाए ना पहले। फाइव मिनट रह गए कैंडल को बंद होने में, 12 बजे वाली 40 या 5 मिनट रह गए। So today on Vara, if you took one MNQ, you made $43 so far. If you took two, 43 times two, you have $86. If you had three multiplier, etc. So मैंने आज सिर्फ 2 ट्रेड किए और उस 43 का मतलब है डिवाइडेड बाय $2। मैंने 21 पॉइंट निकाले हैं सिस्टम में से। ये सिर्फ 21 पॉइंट एक बहुत अच्छा होता है। $1000 के अकाउंट में आपने 40-50 बना लिए। ऑफ कोर्स कहीं मेरे 5 MNQ लगे हुए हैं, कहीं 10 लगे हुए हैं उस रेंज में। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आया $300, मीनिंग वहाँ 5 टाइम मल्टीप्लायर था, 5x। तो क्योंकि उसका थ्रेश होल्ड बड़ा है, मेरे पास $4500 का थ्रेश होल्ड है। यहाँ पर एक MNQ के अंदर मेरा थ्रेश होल्ड ओनली $1000 है। सो वहाँ एक MNQ से जा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल।
लेट्स सी, अगर $170 की मूव आई है डिवाइडेड बाय 2, इट शुड गो डाउन टू एटलीस्ट 85 माइनस 29,205, एटलीस्ट 120 तक जाना चाहिए इसको। 240 पे नहीं, 210 तो हो गया ना, ये अभी 205 से आ गई, तो मैं 210 छोड़ दिया। हाँ, मैंने अब असल में रीजन थी S1Y, पिछले वीक का लो वो है, उसके बाद मिड वो था, तो ये तीनों में मैंने सबसे पहला ले लिया 195, 195 से 180 तक 15 पॉइंट उठाए बंद मैं ले लिया। अब मैं चला गया हूँ 242 पे, 241 पे, 242। या रीजन ये है वो 30 मिनट का इक्वल हाई है और वहां पर अच्छा क्लस्टर बना हुआ है 60 मिनट का, तो इट मिल जाएगी। लेकिन पहले तो अभी 1 मिनट रिट्रेस कर रही है ना, 1 मिनट रिट्रेस करे जाके। सो पर लेकिन जिसने 200 से बैठा है उसको 40 पॉइंट मिल, मैं 137 से गई तो वो मैंने उतार दिया, फिर मैंने उसको मूव कर दिया 195 में। सो नो वरीज। अब अभी अगला जो नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 241, 240 से 250 के दरमियान में इसको रुकना चाहिए। उससे दूर बहुत है, फिर पता क्या, फिर पिवट आ गया 340 का, तो अगर 240 है फिर 340 है। जतन भाई ने एग्जिट अब किया है 165 पे, ट्रेल हमें अच्छा फोमो क्रिएट कर जाते हैं, मीनिंग कि वो लंबा बैठते हैं। हाँ, मैं ले लेता हूँ, मैं नो नहीं नहीं इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो और देखे ना, 200 से बैठे हैं 150 पे निकले, आपने लिए 10 पॉइंट, मैंने लिए 15 पॉइंट, किसी ने लिए 20 पॉइंट, तो बिकॉज ये इंस्टेंट रिवर्सल नहीं होता, वहां पर खड़ी हो जाती है प्राइस, ये बॉटम ऑफ द बार आके पिक हो गई है और आपको 1 पॉइंट दे रही है, 1 पॉइंट आपको रिट्रेसमेंट डाइवर्जन ES दे रही है इस वक्त, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट होने वाले हैं। अब आपने 2 लेने हैं या आपने पूरा लेना है, ठीक है, नो वरीज नो वरीज, रूल नहीं चेंज होता है। ठीक है, एरिया बहुत बड़ा। अच्छा, फिर एरिया में ज्यादा पॉइंट पकड़े, मीनिंग कि वहां पर आप 2-3 ना लें, थोड़े से। हाँ, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, मीनिंग एज लॉन्ग एज यूर अबव जीरो। होता यह है कि आप आए हैं यहाँ बैठे हैं -200 में, आपकी ख्वाहिश थी कि अब -200 पे तो ना जाए, -100 में भी ना जाए। सो एक बार तो when you said ना, when you come and say it turns everything red, नहीं नहीं, then slowly you start अब आपका बॉटम ऑफ द बार ऑलमोस्ट 3 पॉइंट देगी, जा रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है, आपकी एंट्री होनी चाहिए वो। अब एक प्रोबेबिलिटी है कि 240 पे जाए, एक प्रोबेबिलिटी है 210 पे जाए, क्योंकि 210 पे 1 मिनट में डाइवर्जेंस बन जाएगी। देखिए पूरे 5 पॉइंट देखे गया बॉटम ऑफ द बार, पूरे 5 पॉइंट, सो इट्स ओके। एंड होता ही है कि द वंस यू डू टेक एंड अप फेलिंग, द वंस यू डोंट टेक एंड अप पासिंग, दैट्स द, आपने हर एक लेना है और फिर लिखना है। नहीं नहीं, इसमें अभी नहीं लगा था, रीजन मैं आपको बताऊं, वो ट्रूली लोअर हायर हाई से ये वाला लग चुका है। अच्छा, अगर ये हो चुका है, ठीक है ठीक है, फिर सही, अगर एक पूरा 5 पॉइंट दे गया था देन इट्स ए गुड मूव, उसमें आप सिर्फ 2 पॉइंट पकड़ो कि जी 2, तो अब वो वापस आ रही है जी, आ रही है, नैस्डैक चलने पड़ गई है, आपको पूरा उसने रिट्रेस दिया, वापस चला गया। Now it should come down to at least 116. That's the idea. Okay, going back up.
इस लेग में ये दूसरा रिट्रेसमेंट डाइवर्जन थी इस लेग में, जो प्राइस हायर हाई से आई, पहले 5 मिले, इसमें वो देखें लेग पूरी डन। अब मैं बैठा हूं 241 पे जाके। किसी ने बहुत ही अर्ली रिस्क लेना है ना, 210 से पहले ना लीजिएगा, वहां 210 पे डाइवर्जेंस बनेगी। अभी भी जा रही 185, एरिया इज कमिंग। अब नाइट का हाई भी आ रहा है जी आपका, नाइट का हाई है 7703। आपकी रीजनेबल एंट्री बनती है 90 90 89 90 पे अगर आपकी रीजनेबल 77 89 आपकी रेजिस्टेंस बन रही है। 947 से 188, let's see if it breaks 195. Because watching the 1 minute chart, you can quickly see कि NASDAQ का behavior क्या है। 195 equal high तोड़ेगा या 150 equal low तोड़ेगा। Let's see right now. So you can exactly predict which way. Does he want to? So if you watch Zoom, where's my dragging? So we care about this number, equal high, equal low, fib, mid. Right now it's 182. Let's see if it breaks 196, which is the equal low, equal high, sorry. And my trade would be somewhere, let me go, none, 240. नहीं जी जैक भाई, लॉन्ग ना जाइएगा मिड बैंड पे, ऑलरेडी एक अटेम्प्ट हो गई है और उसने टच नहीं किया। डोंट गो लॉन्ग राइट नाउ, stay in short, preferably from 240, just like I put in Zoom, 241 maybe. Yep. 1 minute लॉन्ग ऑलरेडी आप देख लें, पीछे उसने अटेम्प्ट की थी ना एक लॉन्ग जाने की, तो 150 से बाउंस हो गई, which is 32% swing. I want it to go down to 29,075. वहाँ फिब का ग्रीन बैठा है, 80% रिट्रेस हो जाएगी। Maybe from the 1 minute fib green, that's a little bit safer trade than 1 minute. If you do want to go long, wait for 75. Don't go long before. If you do want to go short, wait for 241.
So the ideal would be somewhere around here. There you go. These are the only two trades I can see at the moment, 241 or 75. And how big is this swing from 28,947? So 4 hour candle, 12 o'clock. Now it will slow down, I'm just telling you. अब ये सारी एनर्जी निकल गई है, 1 बजे तक ट्रेडर उठ के लंच की तरफ शुरू चले जाएंगे. So 176. This was good entry though, of 195 to 200. Very, very good entry. Anywhere from 5 points to 50 points. If you even trailed, let's say you trailed at 20 points. 20 पॉइंट तो मिल गए इसमें. $40 का एक ट्रेड और पीछे एक ट्रेड पहले लगा हुआ था, तो अभी तक सिर्फ 2 ट्रेड हुए. Come on. Any given time you can open the chart and you can say, all right, what am I, okay, I'm looking at, it must break 186 or it must break 150. It's very simple. I can see, okay, कहाँ जा रही है, किस साइड पे है. Because it's coming down, because it should go to the bottom of the 1 minute fib, which is $170 move up. Now it should come to at least 75, 1 minute, yeah, 75, 80 तक आनी चाहिए. So this is the officially the first time the mid band will touch on 1 minute. Let me see how many people are sitting at 205, 241. 241. And honestly, you can listen to me
from home and do your own lots of work. Have your Zoom on, and then yeah, I will send you. No problem. So roughly about 45 people sitting there. No problem. No. Hasn't broken equal high yet. We're getting back to 188, 189. It has broken the equal high. 196, 197, 198. देखिए इस लेग में 3 रिट्रेसमेंट डाइवर्जन पूरी पूरी जा रही है, राइट। वो प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपने लेनी है वो खराब हो जानी है, बाकी सही जानी है, राइट। सो हाँ आप देखिए। All right, it has broken. It has to break 210. That is critical number for me to get to 240.
210 is the mid of high and low. So the high is 480, the low is 29,480 minus 28,950 divided by 2. 265 plus 28,950. Yeah, 210 is the middle. 210 is the middle of the chart. There you go. We are at 209 now. 241. 210 को तोड़ेगी तो फिर मेरा अगला अभी 1 मिनट में बाकायदा डाइवर्जेंस बन गई है. तो मैंने ऑर्डर लगाया है 240 पे. तो डाइवर्जेंस बना के it's coming down. Next 4 minutes candles will decide. Yes, आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम कर रही है. आहिस्ता ये NASDAQ के साथ. It means that के 1 2 3 5 दफा मिड बैंड 1510 का चला है. Price came down, touched the mid band and it's going back up. It should at least come down to 116 and then two, 140. कहाँ तक गई थी? 285. 285 minus 140. It's $145 move. Sorry about that. Copy of the metallic question whenever Free. so trader rate, the copy that I was told that trader rate. का built-in free copier है. So if I opt in for that, then I have to put my trades Inside trader weight. हाँ, आप निंजा पे नहीं लगा सकते. तो जो कि अब नया बच्चा निंजा पे भी रवा हुआ है, फिर उसमें जाएगा. नहीं वो तो फ्री वालों के लिए ना. आप 120 का खरीद लें तो वो आपका कॉपियर इधर चल जाएगा. उसका भी बिल्ट एक कॉपियर मिलता है $120 का. वन टाइम है. लाइफ टाइम. हाँ उसका हाँ एग्जैक्टली. यू कैन चैट विद द सुपर एरियास, वो आपको इंस्टॉल कर देंगे. नहीं आप लूसर्ड भी मर्ज कर लें, टेक प्रॉफिट भी. वो बस लीडर और फॉलोअर देखता है, वो नहीं केयर करता कि जितने मर्जी अकाउंट है. लाइव भी या सारे जाया होंगे या सारे बनेंगे, उनका कुछ फॉलोअर का कोई रोल नहीं होता. ट्रेड ठीक हुआ सारे ठीक हैं, ट्रेड गलत हुआ सारे खराब है. मेरे पास आज 70 बंदा जुड़ा हुआ है. 2 ट्रेड हुए. अगर मैं खराब करूँगा तो 70 पीपल खराब होंगे. मैं गया तो अच्छे. नहीं मैंने सारे यही मैंने नंबर दिए हैं, मैंने कोई छुपा के तो नहीं दिए. MES पे तो अभी हम वेट कर रहे हैं 90 का, एटलीस्ट 90 पे आ जाए. और MNQ का हम वेट कर रहे हैं 240 का. ये जो नंबर है somewhere around there it should give us. एक और डाइवर्जन बने, अभी नहीं जाना है सर. 205 को तोड़ना है, 29 को.
एक दो तीन चार पांच कैंडल्स पड़ी हैं 60 मिनट. All right, 212. We're coming close to our number. Let's see, 213, 214. Two 18, 219. Ready ho jaye ji, ready, ready, ready. 223, 224. Come on, yes. Reasonable, हाँ, reasonable है देखिए. हाँ, थोड़ी दो. ठीक है. No. पांच मिड बैंड में देख चुका हूँ. जितनों ने पांच, नहीं नहीं, पहला 5 पॉइंट. लेट्स से अब इस लेग में 5 टाइम रिट्रेसमेंट डाइवर्जन 25 पॉइंट दे गई. अगर किसी ने पूरे लिए, आपका माइंड कहता है 3.75, वो लगा के 5 पॉइंट लगा लो, राइट. सो तो अभी तक इस लेग में कोई भी फेल नहीं हुआ, राइट. तो फुल 25 पॉइंट मिले. अब मुझे सिर्फ गुस्सा ये चढ़ रहा है 224 से वापस आ गई है और वो 241 पे, यस, और वो इधर 85 से आ रही है. सो मे बी विल गो एंड वन मोर टाइम. देखिए 1 मिनट के विंड बैट पे टच हुई है. 170 पॉइंट अप, 55 डाउन, 74 अप. नाउ लेट्स सी व्हिच वे. नॉर्मली मार्केट लाइक S1 S2 कुछ कर रही है, वहीं पे एक ही जगह पे है. यस, S1 को ब्रेक करके नीचे जाती है, उसी को ब्रेक करके ऊपर आ रही है. 77 89 हमारी जी पिवट है. ये पिवट है जी. ये नंबर 89 से 90 है, तो एक पॉइंट नीचे से आप रिस्क ले सकते हैं. हमेशा रिस्क है, हर ट्रेड का रिस्क है. 100% तो है नहीं. नो नो नो. अब हमने 210 पे रिस्क लिया था ना. अब कोशिश ये थी कि 210 पे आ जाए. I think it's 76. It's not. Somebody said कि यार 77 नहीं है, 76 है जी. Very good. Good eye. It's 76. स्ट्राइक में है इसके यहाँ से ट्रेंड दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा. अभी तक वहाँ से सेल कर सकते हैं. अब जो हमारा स्ट्राइक प्राइस आज की है, बस मीनिंग है 77.24 एक्सपेक्टेड हाई जनरली होती है कि एक्सपेक्टेड हाई क्रॉस कर गया तो अब वो दूसरे जोन में चला गया. तो जैसे ही एक्सपेक्टेड हाई क्रॉस करेगा, अब हम बाइंग जोन में लोग बाइंग शुरू कर देते हैं, या वहाँ तक बाइंग. अभी हम डाउन ट्रेंड में. तो स्ट्राइक प्राइस वर्क्स एज योर
अब एक प्रोबेबिलिटी एक ये है कि इस बार में ये 76 78 तक आए, डाइवर्जन बनाए, वापस ऊपर जाए और 90 पे हमें पॉइंट्स दे दे. सो नो प्रॉब्लम, आई एम होपिंग एंड वेटिंग. 276 पॉइंट मूव होगी. एकदम जान सी निकाल देते हैं नैस्डैक से ना. प्राइस लाइक देयर इज नो हार्ड. I always say you have to trade it like a real market, real product. कि आपको कब सस्ता लगेगा तो आप बाय करोगे, फिर मीनिंग पर कब आपको फील हो कि अभी चीज़ें ज़रा महंगी हो गई हैं, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं. होपफुली कि अगर कभी लाइफ में जिस तरह घरों की प्राइसेस थी कोविड के बाद ओवरबॉट हो गई, 4 लाख का मकान 6 लाख 7 लाख 8 लाख, सेम थिंग टर्न टू 1 मिलियन. अब आप शॉर्ट नहीं कर सकते कि आपको है फीलिंग कि इसको गिरना चाहिए, तो ओवरबॉट ओवर सोल्ड ही है. सो बट रिमेंबर somebody did buy a home for 1.2 1 point. When I drive through Caledon, Bolton, Brampton, North Bay, इतने घर सेल पे लगे हुए हैं, बड़े लॉट्स. रीज़न इज़ क्योंकि वो 4-4 मिलियन के खरीदे गए थे, तो उस वक्त तो बस. तो now somebody's profit is somebody's loss, right? So if you were living in somewhere within 800,000 range, it didn't go too crazy up or down, right? But so हाँ जी, नैस्डैक रोज़ ही है जी. वो देखें, फोमो ने आपको हमेशा ये कहते हैं घर से प्रॉब्लम शुरू होती है कि वो आप कि उन्होंने लिया था, वो देखा कहाँ, वहाँ फिर फिर man goes out there, tries to get a mortgage, and anytime you stretch your burn rate and earn rate, 50-50 रिस्क है. आपकी इनकम है 5,000 और अब आप एक्सपेंस में चले गए. सो I was taught one thing. I'm a Pakistani Jew, by the way. Like, I was taught one thing. आपकी मॉर्गेज उतनी होनी चाहिए कि आप टिम हॉर्टन में खड़े होकर निकालो. इन 2,000-3,000 की मॉर्गेज से ऊपर वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाए, अनलेस यू हैव मल्टीपल इनकम. मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ 8-8 हज़ार की मॉर्गेज है, समझ नहीं आती कि that's just a mortgage. Then you have a car payment. Then you have insurance. Then, unless 5 people are contributing, it's okay. But and then people had multiple properties with 4 or 5 mortgages. Yeah, that's like stretching your 1,000 के अकाउंट में आपने 5 NQ डाले हुए हैं, right? So and then you're hoping, oh, all right, this is what it is, right? So see, we did, our group did invest in UAE. We did a sensible, I would say sensible move is everybody bought. We did slow. We said कि ये अगर फट गया तो अब people, इतने लोगों ने लॉस किया है, इतने लोगों ने UAE में कि like people lost millions of dollars because everybody just left UAE. अब वो apartment खाली पड़े, nobody is there. Our apartments, we have 21 apartments and 7 shops. 10 of them are empty. कोई बंदा ही नहीं है. So, but our burn rate right now is around $1,400 per month, which is reasonable. We can afford it. But imagine if you have to pay 14,000 a month or 140,000, तो फिर आप कहते हो जी मेरी बस हो गई है. So
And especially in Canada, I see a lot of people who are stuck with tenants who don't pay. अब आपका टेनेंट नहीं पे कर रहा, मेरा खुद का दोस्त है, उसकी एक प्रॉपर्टी 1 साल से टेनेंट ने पे नहीं किया, तो अब आप $2600 की मॉर्गेज है, $500 उसका प्रॉपर्टी टैक्स है, और बिजली का बिल पाना, $5000 का उसको फटीक पड़ रही है, साल भी बैठ गया तो 60,000 तो आपकी वैसे डिवैल्यू हो गई, राइट? So now hopefully tenant boards and other will come into the picture and say कि इसको, एक तो टेनेंट भी ना 1 साल अच्छा रहता है, फिर एकदम उसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, तो अगर आई लॉस्ट द जॉब, जो करना है कर लो, राइट? So hopefully Canadian government will fix this tenant issue. बैक होम तो आपका चेक बाउंस हो जाए, आपको जेल हो जाती है। मैंने कहा भाई आपने किसी को चेक दिया है, ये क्या, यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, आप जो मर्जी करो जी, कनाडा में कोई नहीं पकड़ने वाला। So let's see. Come on, give me up or down retrace, please. Ideally, I should shut off and go. Ideally. No, idea is if you're green, and you should go. And wait for a right number. What? Right number. Yeah, sitting on 40. I'm breaking yes side. West side? No. It's not charging to you for NASDAQ. The one he set up, NNQ. So, because how I set it up is I disconnect the workspace and then I go into it. And then I can't do anything on this. Oh, no. Yeah, the way mine is set up. Please no buying on MNQ. Please no buying. 30-minute is red, 15 is red, 30 is 60 is still saying don't do any buying at the moment. Because it should at least come down to 50, like 145, 146 should. Then we will think about it. But no buying whatsoever. My So this number on NES, yes. 7710, you think by afternoon when is going to show? Which number? 7710. What's the? It can happen. See, what will happen is just don't put a trade in after 4 o'clock. Because let's say if it goes to 7710, you can get stuck there and they will move the market after 6. So what do you want to do is wait till after 6 and then we'll place the order up there. तो 4 के बाद क्योंकि सारी वॉलेटिलिटी 4 और 5 पे ख़त्म हो जाएगी, अब आप स्टक हो गए हो, अब आपके बाद ना एवरेज करने का टाइम है, 1 आवर रह गया ना, तो 6 बजे जाके ट्रेड डाल दिया ऑर्डर। 6 के बाद देखिए आप 6 बजे कहीं स्टक हुए ना, कहीं स्टक हो गए तो 23 घंटे हैं कुछ सोचने के लिए। कई दफ़ा हम लोग स्टक हो जाते हैं 6 बजे, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद एवरेज करने का टाइम मिल जाता है, फिर रिवर्स करके आ जाते हैं। लेकिन अब 4 ओ क्लॉक स्टक हो गए तो वो फिर 1 घंटा है आपके पास, सिर्फ 1 आवर। 1 सेकंड जी, इसमें 1, 2, 3, 4, ये 5th रिट्रेसमेंट डाइवर्जन, एंड ऑफ कोर्स 5th पे तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि 30, 20, 98% ओवरबॉट है। So my ideal would be let it come, touch midband, go back up, sell from the 90 zone, and then we come back. Now that could take 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4. You have to learn to wait. मेरे साथ बैठेंगे, मैं आपको ट्रेड ही नहीं करने दूंगा, मैं करने ही नहीं दूंगा। क्या जरूरत है?
नहीं 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 देखिए आप देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये लाइव वायरिंग है, कभी आप स्विच के अंदर अपनी उंगली देंगे, करंट लगेगा ना, तो वो आपको नहीं पता कि कितनी गर्म है तार, वो स्विच में प्लीज हाथ जल नहीं नहीं सुनो इसका आइडिया ये है कि यू जस्ट हैव टू बेसिकली ये है कि अगर आप स्लो टाइम ओके रात के 9 बजे ये चल रहा है, ये आपने प्राइस खोली, ठीक है, आपका क्या रात के 9 हो या सुबह के 4 बजे हैं, बैकग्राउंड मेरा क्या ग्रीन, प्राइस हायर हाई से आ रही है, मेरा स्टॉप लॉस 3.75 है, ठीक है। अब आप देख चुके हैं पीछे 4 रिट्रेसमेंट डाइवर्जन है, ना गुस्से, तो आपको बेशक रात के 12 बजे, देखिए अभी तो हम मॉर्निंग बैठे हैं ना, रात के 12 बजे भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, मिड बैंड को बाउंस बैक ऊपर होने दें, तो हम 90 से सेल करेंगे, राइट। सो what I am trying to actively do कि ये जो मेरी टीचिंग है ये AI को दे दें, जिस तरह हमने चार्ट्स किए थे कि आपको किसी वक्त ओपिनियन मिल जाए कि मैंने इस मोमेंट पे क्या करना है, तो सिर्फ आपने रात को 8 बजे हो, सुबह के 3 हो, डजंट मैटर, सिर्फ 4 के बाद रुक जाएं, अब 6 बजे देखें। ऑलराइट, सो अगर यही 30-20 का चार्ट है, व्हाट एम आई लुकिंग एट, सो आई क्विकली 1 2 3, ये 4th रिट्रेसमेंट डाइवर्जन है, मेरा नंबर है 90, पिवट 90 है। 1 रिस्क इज यहीं बैठ जाएं 3.75, दूसरा रिस्क है यहाँ बैठ जाएं, तीसरा रिस्क है फिब पे बैठ जाएं, और चौथा रिस्क यहाँ पर है। तो आप अगर मैं यहाँ पर बैठ ही जाता हूँ, लेट्स से बाय करता हूँ, यू नो स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, ये अगर बिगेस्ट स्टॉप लॉस है ना वो ये है कि मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाइवर्जन पे बैठा हूँ, देख लेता हूँ मिड फिब, यहाँ तक तो बाइंग ही बन रही है ना, यहाँ तक तो हायर लो ही चलेगा, हायर लो के हायर हाई के बाद, सो बट लेकिन यहाँ बैठेंगे ये बहुत बड़े 5 से ज़्यादा है ये बंद, क्योंकि ये 3.75 ये अल्फा 187 हुआ, वेट करें, अब ये आपका मिड आ गया, कोई यहाँ से एंटर हुआ है, पहला मिड बैंड है ये, तो पहले मिड बैंड से अगर आप एंटर होते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1 पॉइंट शायद मिला है, कोई फिब पे बैठेगा कोई, और आखिरी बंदा जो है ना अगर बाइंग करनी ही है वो, तो एनी गिवन टाइम 23 आवर्स अ डे यू कैन पिक ए प्लान, व्हाट डू आई वांट टू डू। अगर बाइंग होती है तो ये आपका मिड था ना, ये आपकी मिड पे बाइंग है, क्योंकि मैं सेलिंग में रहना चाहता हूं तो मैं बाइंग नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूं 90 का, अगर ये 86 को तोड़ गई 90 पे यहाँ डाइवर्जेंस बन जाएगी और प्राइस नीचे आएगी, should come down. Nano is there, can we trade? I think, let me double check if Nano is even available. Tools, database management, Nanos, let me double check Nanos. Instrument, single stock futures, single stock. Now you can trade futures of stock as well. That's pretty cool. You can pick up Meta, Microsoft, Tesla, SpaceX. आप वो भी ट्रेड कर सकते हो. But let me see. हाँ हाँ, अगर किसी ने स्टॉक्स भी करने हैं, नहीं नहीं अभी इस पे आ रहे हैं जल्दी फ्यूचर्स उनके, वेरी सून वो भी बना रहे हैं इसका. Let me see how to trade nanos. Nano NASDAQ August 24 कह रहे थे. Is it ready? Yes. How do I trade? The symbol is NNQ.
Let me see if NNQ I can get some data. NNQ 26. So this is MNQ. Let me go NNQ. How do I get it? New chart. I don't think Ninja has updated nanos yet. ठीक है, 1 minute के मिड पे आइए. Let's see. Go tools, database management, tools, instrument list. I can search for add nano, add N and Q. I don't think that got updated yet. No, Ninja is not supporting at the moment. Instruments list. Change default. बहुत complicated है उसका. आजा भाई नीचे. एक मिनट. वो जो उसकी स्पीच थी. तो ये ना इतना को खास उस तरह है नहीं है. It says medium impact. So कोई बात. ट्रेड के अंदर बैठ के रोना है या बाहर बैठ के? बाहर रो लें, बेटर है. अंदर बैठ के रोएंगे तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस है ना. तो बाहर बैठ के रो लो यार, ट्रेड नहीं आ रहा तो
अंदर बैठ के फिर दुआओं पे चले जाएंगे कि फिर हाँ मीनिंग के इट्स ओके स्लो स्लो नहीं मेरा हमेशा था मेरे सामने बैठ के मेरे ट्रेड से नहीं उड़ने चाहिए अकाउंट लाइक ये no. Oh yeah, yeah. You are pretty okay. I was so aggressive. 10 के बाद एक पे आउट प्लीज ले लो हर 10 के बाद 60 का अकाउंट है नहीं देखो सीधे हो गए ना 2 के बाद ही हो गया $120 बाद ठीक हो गए यहाँ पर लोगों को 20 के बाद में मैंने कल एग्जांपल मुकेश भाई की दी थी एग्जैक्टली 7 आता है मुझे लगा कि उन्होंने बना लिया कहते हैं जी अकाउंट मेरा पीए चला गया फिर मुझे 60 लेने हैं फिर बनाने हैं so it's okay. That's not trading, that's gambling, that's not trading. फिर आप उनको अमीर बना रहे हो ना इट्स ओके या तो लाइव लो 1000 का और 20 और उनको भी पता है 97% फेल कर रहे हैं तो वो आपको डीलों पे डीले दे रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ 60 का ले लो क्योंकि उनको पता है इन्होंने कमाने तो कुछ है नहीं है हम 10,000 बंदों से $60 ले लिए तो $6 लाख बनता है तो फिर ये मैं कर नहीं सकता ना मैं ये आपको पास करना सिखाऊं या फेल करना फिर मेरी तरफ से मैं आपको हर 1000 लेके नहीं मैं कहूँगा फंडेड करो और 2 मिनी डालो यहाँ से ताकि लोग कैन डू दैट सो $1000 का लाइव हो $20 पर डे बने आपके महीने बाद कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा या ये फंडेड हो 1000 का नो प्रॉब्लम आप इसको सीख लो कि कैसे ट्रेड करना है एक दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस आ गया और मैं अगेन आप अंदर जाएंगे वो आपकी ट्रेड की हिस्ट्री खोलेंगे वो कहेंगे ये क्या हुआ 70 ट्रेड हुए हैं 40 ट्रेड हुए हैं 20 ट्रेड हुए हैं क्या समझ नहीं जब से मेरा ये अगेन 3rd वीक का पहला दिन है पिछले 3rd वीक फर्स्ट डे आप देखोगे 4 ट्रेड हो रहे हैं 5 हो रहे हैं 8 बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए 8 हो गए नो रीज़न मेरे अभी आज 2 ट्रेड सिर्फ हुए हैं एक हमने लिया हिट एंड रन नंबर भूल गया हूँ 195 तो एक लिया ना और उससे नीचे एक हमने लिया था कि अगर वहाँ नहीं एक उससे 195 दूसरा था शायद हाँ 116 120 पे 110 पे लिया फिर 195 पे लिया और अब तीसरा 240 पे लेंगे बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट के लेट्स सपोज कि मैं 240 लेता हूँ और प्राइस चढ़ जाती है 240 260 280 290 तो व्हाट कुड बी माय एग्जिट राइट सो अब वो नंबर जो था वो चला गया कहाँ से ये प्राइस गई है जी 87 से ऑलमोस्ट अभी भी वो मिड बैंड पे प्राइस खड़ी हुई है अगर आप तो आप सिर्फ ये ES देखनी है तो एक देख रहे हैं मैंने बाय जाना है या सेल जाना है अगर बैकग्राउंड ग्रीन है हाई से आ रही है तो बॉटम ऑफ द बार या मिड बैंड पे मैं बैठ जाता हूँ या फिब पे या रियली ये दो तो हमेशा मैं ग्रीन में जाऊंगा बाय और रेड अनलेस के मैं एरिया में चला गया अगर एरिया में मैं अभी जो मिड बैंड पे बैठा है वो काइंड ऑफ ब्रेक इवन है इस वक्त मिड बैंड के ट्रेड मुझे NASDAQ चाहिए बिलो रियली डाउन 110 के करीब 910 पे 28 910 माइनस 29 185 $275 वापस नीचे चाहिए और आप देखेंगे जैसे जैसे आप लेस ट्रेड करेंगे उतना और कैलकुलेटेड ट्रेड करेंगे तो उसमें लॉसेस भी कम हो रहे हैं आप होता मोस्ट पीपल जस्ट हिट मार्केट अच्छा जी बाय ऊपर जा रही है मार्केट दबाओ आपने मार्केट दबाया वहीं रुक गई अब वो वहां से रिवर्स हो रही तो मार्केट तो जाना ही नहीं है मार्केट तो ओनली टाइम नहीं आपने यहाँ मार्केट ऊपर दबा दिया था आपने कहा ग्रीन ही जा रहा है वाइट लाइन यहाँ देखी वहीं से रिवर्सल शुरू हो गया
तो या बाय या करें या यहाँ करें या यहाँ करें या यहाँ करें, 3 बाएंगे। I know it's boring. It's okay. No worries. I need to. Getting too much of calculating. No worries. Then pick a different method. होता है meaning के हमें क्या? What's the rush here? I don't know the rush. 90%. There's always that. लेकिन दूसरा अगर पहला फेल हो जाता है तो दूसरे में लेने 5 हैं, अदरवाइज आप। अब मैं कई दफ़ा हो जाता है फारिग बैठे हैं ना, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 12, 1 बज गया, 2 ट्रेड हैं, नहीं लूँगा मैं, बैठा हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मार्केट मैंने डिसाइड करना है कब ट्रेड लेना है, मार्केट की तो नहीं मैंने ना सुन के अपना अकाउंट ज़ाया करना, क्योंकि यहाँ 50-50 है। मैंने बाई कर लिया, 50% है प्राइस मेरे फेवर में, तो मैं 50 को बनाना है मैंने 98-100%। सो अब अगेन रिजल्ट्स हैं तो ये सामने है, दूसरे का ट्रेड है, फिर मेरे अकाउंट क्यों नहीं दाया होते जी? अभी तो मैं सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर रहा हूँ। एलूसिव, लेट्स से लॉग इन माय पोर्टल, क्या हो रहा है जी? ऑथेंटिकेशन कोड, ये आज के 100% ट्रेड ओके, कोई डॉलर कास्ट एवरेज नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, 100% ओके, 100% ओके। यहाँ सिर्फ ट्रेड ही नहीं लगा था, सिर्फ एवरेज करनी पड़ी। और आज हैं $280 बने हुए, क्योंकि 5 MNQ से गया हूँ, अकाउंट बड़ा है, जो नॉर्मल है उसके डिवाइडेड बाई आप 10 कर लो, तो स्लोली बहुत एग्रेसिव खेलेंगे तो एक NQ के साथ, बट एक दिन ऐसा है जहाँ पर लॉस लेना है, वरना अकाउंट चला जाएगा। मेरे अकाउंट में 4500 थे, आई डिसाइडेड नाउ दिस इज आई एम फायरिंग विद इट, तो खत द अकाउंट। पूरा अकाउंट तो नहीं ड्रेन करना ना, मेरे $250 लगे हुए हैं, इन्वेस्ट हुए हैं, 250 एटलीस्ट मुझे वापस आ जाए, फिर मैं इस अकाउंट को तेज़ खेलूँगा। तो आई नो कि विच इज़ द डे। अब होता ही है कि आप मिनी चले गए, पहले तो मिनी जाना नहीं है। मैं इसमें ट्रेड वेट में लॉग इन करके आज के सारे ट्रेड आपको दिखा देता हूँ कि ये गया ना अकाउंट, ये सामने लिखा है अकाउंट समरी, ये लिखा हुआ है व्यू डिटेल, तो ये आपको बता देता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे गए और आपका। और अगर मैंने इसकी हिस्ट्री देखनी है तो ट्रेड वेट लॉग इन, तो वी कैन अगर जैसे हमारा 1000 का है हमें लॉस, हाँ अगर उसमें भी हम काइंड ऑफ $300 30%, उसमें भी लेट्स से लाइक आई नो उसमें भी मैं लाइक आई एम 600 नहीं फिर तो आपका अकाउंट 600 का है ना। मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आपने दिए मिनी से ना माइक्रो से, नो वरीज। अब आपका मैक्सिमम 200 है। अगर आप देखें मेरे 4500 में मैंने स्टॉप लॉस उस दिन लिया था हाफ अकाउंट पे, 25 चले गए, तो लाइक सर ये देखें आगे आ गया ना, तो जस्ट रोज के 50-50 डालती जाए तो वापस चला जाएगा, तो आप उसको ट्रीट। तो अच्छा, आपने अगर लाइव में भी ऐसे लूज किए हैं तो वापस तो ऐसे ही जाना है ना। तो ये अब इसका सिर्फ फर्क ये होता है कि ये थोड़ा आपकी कॉस्ट $60 लग रही है, राइट, वर्सेस 1000 रियल। तो कैसे रिकवर किया देखें, चलें, लेट्स डू अ बिट ऑफ अ मैथ हियर। आपके सामने हो, कोई डिफरेंस नहीं है। देखें हुआ ये 2574 एग्रेसिव ट्रेडिंग, ठीक है, 904 1094 1765 640, मेरे पास 7000 बन गए।
एकदम मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग की उस दिन और सिर्फ 36% ट्रेड विन हुआ, -2571 मेरे पास काफ़ी नीचे आ गया, ठीक है। फिर इसको फिर रीअसेस किया कि अकाउंट जिंदा हैं, अकाउंट में से मेरे पास 4500 में से 2500 चले गए, मेरे पास $2000 है, ठीक है। 5 MNQ से फिर 659 कर लिए। अब ये 2571 रिकवर करना है ना, 2571 करूँगा तो मैं उस 13 अगस्त वाले दिन आ जाऊँगा, उसमें से 659 एक मुझे मौका मिला, मैंने रिकवर कर लिया। 209 माइनस 335 माइनस 173 माइनस 64 माइनस 280, मेरा सिर्फ 850 का रह गया। मीनिंग 850 के बाद मैं वापस उसी जगह आ जाऊंगा 13 पे। तो इस अकाउंट को मैंने पहुंचाना है 9000 पे, मैं ऑलरेडी 6000 पे पहुंच चुका हूँ, राइट। तो 3000 मोर के बाद रियल कैपिटल है, मीनिंग कि मैंने कितने इन्वेस्ट किए $250, मुझे कितना लूसिड दे रहा है $4500। अब अब आपको रियल अकाउंट मिलेगा 4500 का, 4500 का, नहीं उसमें कोई चेंज नहीं है। अब मेरा माइंड क्या कह रहा है, भाई राफे $250 तूने इससे निकालने हैं, मेरा ये माइंड कह रहा है ना। तो मैं जैसे ही 45 इनके वापस कर दूंगा, मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट इन्होंने खोल दी, मेरी इन्वेस्टमेंट 240 और दूसरी उनका रिस्क सारा, अब 4500 हैं। अब मैंने 5 अकाउंट लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 अकाउंट, सारे डिफरेंट स्टेजेस, 6600 6600 6100 डिफरेंट स्टेजेस पे 7400, इनको अनलिंक कर दूंगा कॉपियर से, ठीक है। अब मेरे पास $1000 250 टाइम्स 5, मेरे 1205 इन्वेस्टेड हैं। मेरे पास कैपिटल कितना आ जाएगा, 4500 टाइम्स 5, मेरे पास 22000 का कैपिटल आ गया। अब 200 500 100 1000 करते करते जिस वक्त मैं 40, अब दूसरी क्लाइम मैंने 9000 की नहीं करनी, सिर्फ 4500 के बाद। तो जिस दिन मेरे 250 मेरे वापस आ गए, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि अब मेरे पास फ्री का कैपिटल है। तो फिर मुकेश भाई की तरह एक मिनी डाल दिया, वो सारा फ्री का पैसा है। अब भाई जाए तो चला जाए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से मेहनत कर लूंगा नीचे की। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि किसी तरह लूसिड से $1250 रिकवर करने हैं मैंने, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो हो जाता है, इट्स नॉट। अब देखिए फिर पे आउट शुरू हो जाते हैं ना, आप रिकवर कर लो, फिर आना शुरू हो जाता है 765 700 777। तो अब आपने सिर्फ ये देखना है मैंने लूसिड को पैसे दिए कितने। अब आपके केस में अभी तक आपने $120 दिए, ठीक है। अब आपकी कोशिश है जनरली 10 to 1 के बाद आपका, अगर आपने 10 अकाउंट उड़ाए $600, 600 उड़ा दिए ना, 610 क्या 15 क्या, लोग तो 5-5 इकट्ठे खरीद रहे होते हैं। एक अकाउंट भी निकल गया ना, 11वां भी निकल गया और उसमें से 600 आगे, आपके सारी रिकवरी हो जाती है, राइट। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के पहले हम लोग जब एपेक्स करते थे, मैं कहता था 5 के बाद एक निकाल लिया करो इतना। अब तो मैं कहता हूँ लोग जिस हिसाब से अकाउंट ब्लो कर रहे हैं, 10 के बाद भी एक आ जाए स्टिल ए विन। तो आपने सीधा होना है, 1 के बाद हो जाओ, 2 के बाद हो जाओ, 5 के बाद हो जाओ, मेरी तरफ से 30 के बाद हो। अब मेरा तीसरा वो चला ना जा रहा है, बट आई थिंक अब मुझे अंदर एक भाई बैठते हैं 18 के बाद सीधे हुए, 18 अकाउंट, नहीं 18 नहीं 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 नहीं, आपके पैसे जाया हो रहे हैं, लूसिड अमीर हो रहा है। 18 का मतलब है $1800 चले गए, अगर एक्चुअली 18 टाइम्स 60, $1000 आपका लॉस हो चुका है, राइट। तो आप वो $60 देते हो, वीडियो गेम की तरह खेल रहे हो, ऐसे नहीं खेलना इसको, एटलीस्ट 60 तो रिकवर करो जो दें, तो फिर हो जाते हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ माइक्रो से आपका अकाउंट। दूसरा पता अकाउंट थोड़ा सा ना, वो कहते हैं कि उस चक्कर में मेरा सेकंड भी बच जाना था। आई वाज लाइक आई स्टिल हैव $200-300 था लॉस, उसमें मुझे लगा कि चलो इसको मिनी में डाल के ओह मिनी तो सुअस, या तो इधर ही आऊंगा। नहीं फिर आप गैम्बल पे आ गए ना, इट वाज लाइक जस्ट एट द पॉइंट कि ना इधर नहीं फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना। आप देखिए मेरे में क्यों नहीं आ रही, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे तो नहीं कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही। रीज़न ये है कि मेरे पास लेट्स से कुछ 15 से 20 अकाउंट है, टेक प्रॉफिट के 5 हैं,
इनके 5 हैं, उनको मैं स्लो पेस से लेके जा रहा हूँ। तो एंड ऑफ द डे अब टेक प्रॉफिट का अकाउंट मुझे रोज के 200 200 250 डॉलर दे जाता है। एक मैंने ट्रेड अच्छा लिया 200 शाम को, तो अब मैं उस स्टेज में 5 साल के बाद या साल के बाद बंदा पहुंच जाता है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। It's okay. Man, Learning a lot from no, you. no, it's a slow process. It's painful, but it's slow. मैं यूज कर रहा हूँ VPS, तो हमारे पास शिकागो में हमने जाके रेंट किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप लोग यहाँ से ट्रेड करो अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि मैं जब मेरे नंबर ऑफ अकाउंट्स ज़्यादा हैं तो मुझे इंटरनेट वहाँ चाहिए, पावर चाहिए, तो वी हैव जस्ट रेंटेड इन शिकागो। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट 7-8 हज़ार डॉलर है तो आपको एक VPS रेंट करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे मेरे पास 90 अकाउंट एनी गिवन टाइम चल रहे होते हैं। तो मीनिंग एपेक्स भी चला रहा हूँ, ट्रेडफाई भी। लेकिन जैसे ही स्टेज 2 में आ गए हैं, क्योंकि ट्रेड प्रॉफिट एपेक्स आपको 1 मंथ में फिनिश करना है, राइट? तो वही थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा होता है। अब मैं पैरेलल टेक प्रॉफिट भी चला रहा हूँ इस वक्त लाइव, राइट? मैंने $9,000 फिनिश करना है सितंबर से पहले। सितंबर आपका है व्हाट यू कॉल इट 3rd से पहले। अब मेरे पास कितने दिन रह गए हैं? ओनली 6 दिन। तो मुझे 9,000 नहीं किया ना तो $1,000 और चार्ज कर लेंगे। अब वो मैं 5 माइक्रो से नहीं कर सकता, वो एक मिनी से डालता हूँ, क्योंकि 9,000 को एक महीने में करना इट्स अ बिट ऑफ ए लाइक अपहिल बैटल। और एपेक्स है, कई दफ़ा आपको उसमें 20,000 बनाना होता है, तो आप 5 NQ से जाते हो, राइट? तो लेकिन एंट्री सेम होती है, कोई एंट्री मेरी इस साइड पे डिफरेंट नहीं है कि मैं इधर जा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो एक दफ़ा आपको पता हो कि व्हाट इज़ माय मनी गोइंग इन, व्हाट इज़ माय मनी गोइंग आउट, हाउ मच एम आई, फिर आपका ये प्योर बिजनेस है कि मैंने और फंड अब लाइव है। 5 दिन हो गए हैं, 4 दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक नंबर का वेट कर रहा हूँ। 27,200 का वेट कर रहा हूँ, वहाँ बैठूंगा। सो या 29,000 30,000 का वेट कर रहा हूँ। तो वो फिर क्योंकि उसको हमने होल्ड करना होता है 5-5 दिन, तो सारा टाइम, तो eventually you will make this a full time job, and फिर आप कहते हो मैन, क्योंकि अगला फिर ट्रेडफाई शुरू हो जाएगा, आपका पैरेलल बुलनॉक्स हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा। तो टॉप कंपनीज लूसिड, टेक प्रॉफिट, पर्डिया, ठीक है। पर्डिया ने से मैंने और मेरे बेटे ने 30-30 हज़ार निकाल के उन्होंने हमें बैन कर दिया। वो कहते हैं भाई पर्डिया नहीं अब लेना तुमने, तो नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, नो वरीज। तो पर्डिया हो गया, बुलनॉक्स हो गया 2, टेक प्रॉफिट 3, लूसिड 4, एपेक्स 5, ट्रेडफाई 6, फंडेड नेक्स्ट 7। तो लोगों ने 20-20 कंपनियां चलाई होती हैं साथ साथ एट ए डिफरेंट स्टेज। कुछ को 1 माह का टारगेट में करना है, और फिर आपके पास स्किल आ जाएगी कि आपने ट्रेड कॉपियाँ कैसे यूज़ करना है। उस वक्त फिर VPS की ज़रूरत होती है, अभी नहीं होती, राइट? अभी आप सेपरेट करें, मेरी रिकमेंडेशन अभी आप उसको सेपरेट चलाएं, क्योंकि पर्डिया ट्रू पेमेंट वाला अकाउंट है, आपको इंस्टेंट फंडेड मिलती है, राइट? नॉट रिकमेंडेड टू गो पर्डिया विद अ कॉपियर, स्लो। पर्डिया आप पर्डिया से अच्छा लूसिड डायरेक्ट है ना। आई डोंट नो, पर्डिया तो महंगा बहुत है। वो तो ठीक है, लेकिन आपने एवेल्युएशन वाला लिया है, आपने इंस्टेंट नहीं लिया। इंस्टेंट कितने का लिया है? वो कौन सा साइज है? ठीक है, वो रीजनेबल प्राइस है। आपने बनाने हैं उसमें 1,000, और 1,000 आपको पूरा दे सकते हैं वो। एग्जैक्टली, दैट्स दैट्स सो ये होते हैं इंस्टेंट फंडेड, कोई मंथली फीस नहीं है। नहीं, इट इज़ ओके, बट हम लोग कोशिश करते हैं उस अकाउंट को क्लोज ना करें। 170 आपने दिए, 1,000 बना लो, उसके फौरन बाद उसमें से 170 निकाल लो, आपके पैसे पूरे आ गए। अब आप उसको जो 800 का अकाउंट है उसको लेके चलो, नो प्रॉब्लम। टेक आउट योर फीस। ये हम लोग इस तरह देख रहे होते हैं कि पैसे कितने इन्वेस्ट किए, उसके बाद तो आपका देखें। लूसिड में आपने कितने बनाने हैं? 1250।
ठीक है। राउंड 2 में आपने बनाने 1000। अब आपको 2250 के बाद कुछ पैसे मिल रहे हैं। Oh, so okay, so it's not gonna reset to zero. No, It's no, gonna be no, no. above 50 12 plus on top you have to make another another, वो आपका उधर चला जाता है। तो आपका जो लूसिड है, आपका राउंड 1 ऐसे है, 25,000 का अकाउंट है, आपको उन्होंने दिया $1000 का लॉस मैक्सिमम। आपने इसको पहुंचाना है 26,250 पे और लॉस ना हो जाए। तो आपकी क्या कंडीशन है? नंबर टाइम अनलिमिटेड है, एक दिन 2 दिन लो या 200 दिन ले लो। टारगेट आ गया 1250 और लॉस आ गया 1000। जब आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपको राउंड 2 दे देंगे। राउंड 2 की कंडीशन आ गई वही 25 से शुरू, 1000 अप और 1000 डाउन। तो आपने 26,000 पे ले जाना है। तो राउंड 2 का है नंबर 1 टाइम अनलिमिटेड और एटलीस्ट 5 डेज मिनिमम, मैं लिख देता हूँ मिनिमम 5 डेज। नंबर 2, नंबर 3 टारगेट आपका 1000 एंड स्टॉप लॉस 1000। तो जब आप 1000 बना लेंगे उसमें से आपको $500 मिल जाएगा। ये 5 डेज की कंडीशन 5 डेज से पहले आपको वो कंप्लीट नहीं करते। नहीं, तो वो हर डे में आपको 100 बनाना मिनिमम 100। आप बेशक 100 दिन ले लो, 5 दिन तो ऐसे होंगे ना कि 100 5 दिन तो ना, लगातार नहीं, कोई कंसेक्यूटिव। नो 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 नो, कोई इतने रूल्स नहीं है। आप वो नहीं 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 नहीं, बकायदा वहाँ लिखा हुआ है कोई से भी 5 दिन। आज आपने $10 बनाए, आपका दिन काउंट हो गया, आई मीन सॉरी, आपके पैसे काउंट हो गए, इसमें चेक बॉक्स नहीं आएगा। तो आपको कोई से भी 5 दिन, आपने 40 दिन ट्रेड किया, सिर्फ 5 ऐसे चाहिए जिसमें 100। अब देखिए, लेट्स सपोज आपने 40 दिन ट्रेड किया और आपने $20 बनाए, 800 तो यही बन गए ना। तो लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसे दिन तो होंगे जिसमें आपने 100 बनाए, $100। So once फिर जब आप निकाल लेते हो फिर 500 रह जाता है। फिर वो नहीं नहीं, आपने ऐसा ही किया, आपने लिया 25 को कर दिया 26, 1000 है, 1000 में से आप 60 निकाल लो, 100 निकाल लो, 500 तक देंगे आप। अब आपके पास फिर 500 रह गया, आप फिर 5 दिन और ट्रेड करके इसको ऊपर ले जाओ, फिर 500 निकाल लो, फिर 5 दिन और, तो आपके 100 दिन वाले 100 वाले, तो हर 5वें दिन आपको एक मिल रहा है। नहीं, कंसेक्यूटिव तो पॉसिबल नहीं है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं 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 नहीं, नो नीड फॉर एनी। अभी 2 कुछ भी नहीं है जी। तो अभी एज लॉन्ग एज यू गो स्लो यू आर फाइन। 154 तक गई, आई थॉट इट वुड गो टू 140, इट्स ओके। It jumped from 165 to 198. All right, has gone back up to 200, came down from 224, came down to 154. And now hoping for ES to go top of the ES का mid band अभी पूरा। मैं 240 पे बैठा हूँ जी, ऑर्डर लगा के बैठा हूँ। मेरे दूसरी साइड पे ऑर्डर लगा हुआ है जी, नीचे 910 पे, 28,910 पे बाइंग का।
28,910 जो 947 से नीचे है. So लंदन का हाई है 283 और एशिया का हाई है 480. So let's see which way it's going. $209 heading towards 240 zone quickly. We're back to the mid-range of 210. क्या चीज? हाँ अभी 225 तोड़ेगा तो फिर अगली बात शुरू होगी. 150 से तो एकदम 60 पॉइंट ले गए ऊपर. नहीं 225 नहीं तोड़ा. So let's say it's coming down. Sorry, 6 No problem. Take care. सत्ताईस 200 है.
नंबर देखिएगा बस, वो इसको देखते रहे ना।
आ रही है, गिर रही है, दोबारा गिर रही है. थोड़ी सी तेजी आई है, थोड़ी सी. If it breaks 116, that's what then it should then continue the trend down. So
फ्लेक्स ही ले आओ, फ्लेक्स लें, एंड ऑफ डे लें और नो डेली लॉस लिमिट लें। ये वाला एंड ऑफ डे, नो डेली लॉस लिमिट, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेड में फंस गए तो वरना वो -600 पे आपका ट्रेड बंद कर देगा। बंद, यस। और अगर मैं इसमें ऐसे कोई लिमिट होती है कि इतने ही ले सकते हो आप? नहीं, पाँच ले लो, 10 ले लो, दे वांट योर मनी, दे डोंट केयर। तो ट्रेडो वेट के साथ उसको जोड़ के, हाँ, लेकिन अभी एक एक करियो उसको। ट्रेडो वेट में आप देखोगे इधर या उधर, कैसे ट्रेड डालोगे? ट्रेडो वेट का कॉपियर है तो मुफ्त का ना, उसमें एटीएम लगती है, कुछ भी नहीं लगता। तो इससे जनाब की हाल चले सर, लॉन्ग टाइम सर, मैं वापस आ गया थोड़े सामने। की हाल चाल है? सही जा रहे हैं, हल्का फुल्का सही चल रहा है चबल सही ना वजह ते पता यार। चबल मारनी पैंदी है ना थोड़ी। और लेकिन तुझे रात वाले करया करो ना, सवेरे नहीं। रात दे ट्रेडर हो ना नहीं तुसीं। मैं रात है लेकिन सवेरे तो मैं पढ़ना ही माइक्रो। हाँ ठीक एक माइक्रो तो उत्ते मैं जानता ही नहीं, दो ज्यादा। है। बकरी बन गए हो? नहीं बकरी नहीं शेर तो बकरी आ गए हो। नहीं रात में मैं ला दें। अच्छा, मैं 3 महीने ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਾਉਂਡ 750 ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ 3 ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਵਾਈਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ 3 ਮਾਈਕਰੋ 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦ ठीक है। राती में नहीं कर रहे हो? ਰਾਨੋ ਮਿਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ये खुदा था ना, लाइव स्ट्रीम जा रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾਵਾਂ? ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ, ਗੈਮਲਰ ਪਾਵਾਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ क्योंकि मैंने तो चेक भी कर रहे थे। मैंने तो हराम है, हराम। हाँ जी सॉरी माइक्रो। माइक्रो ठीक है, अब तो नैनो का जमाना आ गया, अब तो माइक्रो भी राजा है। माइक्रो ठीक है। आज मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं, सिर्फ 2। MNQ पे कहीं 5 MNQ, कहीं 1 MNQ, डिपेंड करता है अकाउंट का साइज क्या है मेरा। देखा, जो तो $1000 का अकाउंट है वहां तो 1 MNQ चलाऊंगा ना। जो जरा 4500 का है उसका 5 MNQ चलाऊंगा। सर 50,000 प्लस एवैल्यूएशन नहीं देना चाहिए? नहीं, बहुत टारगेट बहुत बड़ा है, 25,000 वाला बहुत है बिगिनर्स के लिए यार। आप 20 दिन कंसिस्टेंसी से चल गए ना, 20 दिन का मतलब है 1 माह प्रॉपर, तो यू आर अ ट्रेडर इन माय ओपिनियन। 20 दिन का टारगेट होता है। अगर 20 दिन आप 100 बना लो या 50 बना, मीनिंग के ग्रीन जाए या जीरो जाए, नंबर 1। नंबर 2, नेगेटिव गया तो 300 से ज्यादा ना जाए माइक्रो पे। ये कंसिस्टेंसी कहलाती है कि आपको पता है लॉस कहाँ लेना है। तो वो 300 से ज्यादा, 300 नहीं होता यार, माइक्रो में लॉस नहीं होता। मिनी में हो जाता है, 6 पॉइंट गए वो गया 300, दौड़ता दौड़ता। होता ही है कि आप ट्रेड आता नहीं है तो आप डाल देते हो मिनी और फिर अकाउंट चला जाता है। मैं अगर माइक्रो कर रहा हूं तो आप लोग क्यों नहीं? बैठा हूं माइक्रो में। अभी सर एमएनक्यू जैसे MNQ का वेट करें 240 का। अगर वहां आती है शाम के 4 बजे तक तो ठीक है, नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, फिर 6 बजे देखेंगे। और सर
MES का वेट कर रहा हूँ 7689 का, जो बहुत मुश्किल लग रही है अभी। उसने हायर हाई के बाद हायर लो बनाया और फिर जा रही है नीचे की तरफ, सो आई डाउट इट। सब कुछ करो, कोई नहीं, एज लॉन्ग एज आप ये ना करो NQ पे लॉन्ग, ES पे शॉर्ट, उसको हेज कहते हैं, वो नहीं अलाउड। या MES पे शॉर्ट और MNQ पे लॉन्ग, वो भी नहीं अलाउड। बस एक डायरेक्शन से रहो फिर कुछ ठीक है। हाँ हाँ, नो एट ए गिवन टाइम। अब मुझे सिर्फ हेलो एक दफा लिखेंगे, एक दफा फिर पिंग करेंगे ताकि वो मैसेज ना नीचे दब जाते हैं, तो आई विल रेज इट अप। तो मैं इसको राइट अवे एड्रेस कर लेता हूँ आपका। जैसे 3 महीने से मैं इधर आ रहा था। हाँ जी, तो मेरे लिए पर्सनली शायद कुछ भी ना जानते हुए मुझे मंडे टू थर्सडे जो सुबह 9:30 मार्केट खुलती है ना, तो उसके पहले 5-10 मिनट में मेरे को ऑलवेज माइक्रो में $40+ हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक MES से 8 पॉइंट निकाल चुके हो। सर, और वो मंडे टू थर्सडे हमेशा ही हुआ मेरे साथ। ठीक है, वेरी गुड। उधर की डालो। नहीं नहीं, आपने कुछ देख के तो कर रहे हैं ना, आंखें बंद करके तो नहीं ट्रेड कर रहे हैं ना, तो मीनिंग कि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, तो दैट मीनिंग दैट समथिंग इज वर्किंग, तो करते रहे। बस मैं इसको तो उसको 2 माइक्रो कर दें तो 80 हो जाएगा, बात खत्म। 7:30 पे बैठे 7:40 पे खत्म हो गया, 9:15 पे बैठे 9:30 पे खत्म करके दुकान बंद करके खत्म। There is nothing that has to be, या जो देखिए अगर कर रहे हैं चल रहा है तो डोंट वरी अबाउट। नहीं, लेकिन आप फिर बिना देखे एंट्री कर रहे हो ना। अब मैंने अगेन 2 ट्रेड आज करवाए हैं, सिर्फ 2 MNQ के, और MES के अगर किसी ने सेल किया तो ये आपकी बाइंग ये बनती 1 2 3 3, और ये भी एक्चुअली दे गई थी 4 ऊपर जाते हुए बने, अब नीचे आते हुए यहाँ मिड बैंड पे दे गई कुछ पॉइंट, और तो आप नेट पॉजिटिव होने चाहिए, और मेरे सामने बैठ के इवन जीरो भी मेरे लिए नेट पॉजिटिव है कि जीरो में आपका नुकसान नहीं। और MES जी, MES माइक्रो, अब अगर आपने ये देखा है कंप्यूटर खोला है ट्रेड डालना है, क्या होगा, यहाँ जाके सेलिंग है, ये टॉप ऑफ द बार, ये मैंने ऑर्डर लगाया है, ये मेरा इस वक्त कंप्यूटर खोले, रात खोले, सुबह खोले, दोपहर खोले, बैकग्राउंड है मेजेंटा, ऊपर लिखा हुआ है बेरिश, तो मैं सेल करूंगा ना, कहाँ से, टॉप ऑफ द बार से। 30-20 है, मैं 15-10 देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो जितना आप देखो सर दर्द शुरू हो जाती है। हाँ, और स्टॉप लॉस लगाएं 15 टिक्स के ऊपर, मुझे ATM सेट कर लेना, आप ATM बना लें कि मेरी स्टॉप लॉस है रिट्रेसमेंट डाइवर्जन 14, कितना बनेगा, स्टॉप लॉस 15 टिक का, ये लग गया, और TP 20 का लगा दे, ये लगा दिया ऑर्डर मैंने। अब 2 चीजें होंगी, प्राइस ऊपर आएगी या मुझे TP दे देगी या स्टॉप लॉस, 2 ही चीजें हो सकती हैं, थर्ड तो हो नहीं सकती। अगर TP हुआ तो मेरे 5 पॉइंट बने, मेरा 1 माइक्रो से 25 बना, 2 माइक्रो से 50, और 2 माइक्रो से मेरा लॉस कितना, $37 का। तो मैंने आपसे कहा हुआ है अगर आप पूरे 23 घंटे में भी 100 ट्रेड लो और 50 भी सही गए ना, तो आपकी फेवर में जाएगा, ये दैट्स द स्टैट्स ऑफ इट। लेकिन कंडीशन ये है
बेरिश हो, लोअर लो हो, टॉप ऑफ द बार करना है। ये देखें, ये मैं अपना ऑर्डर ये लगा देता हूँ, बेरिश है, टॉप ऑफ द बार, बेरिश है, टॉप ऑफ द बार। नहीं नहीं, नीचे से आ रही है, नहीं नहीं, बेशक बेशक, तो वो तो मैं खत्म हो गया, इसका एक ही रूल है, लोअर लो से प्राइस ऊपर हो रही है या हायर हाई से। मैं नहीं नहीं नहीं, वो देखिए हायर हाई से नीचे आएगी तो आपने बाइंग करना है। हाँ, लोअर लो से सेलिंग में। अब मैं बैठा हूँ टॉप ऑफ द बार 71 पे बैठ गया हूँ, मुझे कंप्यूटर ने कहा सेल करना ना 71 से पहले ना करना, बस दैट्स इट। आप और कंप्यूटर ने साथ ही कहा भाई 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना, इससे ज्यादा ना लेना इस ट्रेड में। ये 30, अब मैं क्योंकि 15-10 देखता नहीं हूँ, क्योंकि लोग उधर कंफ्यूज होते हैं, यार इधर चार्ट कुछ और कह रहा है, इधर मैं जाता ही 30-20 पे और टॉप होता, क्योंकि ये 15-10 का मिड बैंड है बाय द वे, वही बनता है। आपने यहाँ नहीं ले सर 15 टिक, एक रूल है 15 टिक, अगर आप मिड, मैं पूरा 5 था, पूरी कैंडल तक, पूरी कैंडल भर गई तो मेरे को 5 पॉइंट तो मिले ना, वी टिक। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਾਪ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗਣਾ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਟੀਪੀ ਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਖਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਆਂਦਾ, ਫਿਬ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕੁਅਲ ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲੀ ਰੀਟਰੇਸਮੈਂਟ ਡਾਇਵਰਜਨ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ not the end of the world। ਤੇ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਯਾ ਤੇ ਟੀਪੀ ਹੋਈ, ਟੀਪੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀਮਮ ਯਾਰ, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ। ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਟੌਪ ਫਰਮ ਕਿਹੜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੂਸਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸਿਡ ਦਾ ਲੈਣਾ 25,000 ਵਾਲਾ ਫਲੈਕਸ, DLL ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, एंड ऑफ डे रखना, तो मैं लिख, हाँ कि अगर मैं लिख देना है, क्योंकि इस वेले बिगिनर्स वास्ते लूसिड 25K फ्लैक्स, नो DLL, एंड ऑफ डे, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਪਏਗਾ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਜਾਂ 70 ਜਲ, ਅਗਰ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ $500 ਪਏ ਨੇ, ਲਿਮਿਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 200 ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ $500 ਫਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ 1000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1% ਡੇਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 1% ਕੀ ਹੈ, what is 1% of 1000? $10। ਅਗਰ $10 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, $10 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। $10 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ 10 divided by 1000 1% ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਰੇਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5%। 20 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 3% ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, $30 ਟਾਈਮਸ 20, ਐਂਡ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 1000 ਦੀ 1600 ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇਜ਼, ਕੋਈ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, 3% ਅ ਡੇ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ 3% ਅ ਡੇ ਯਾਰ, 3% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 240 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ $30 ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 240 ਜ਼ਰਬੇ 30 $7200 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। Everybody looks for dollar amount, I go for percentage man, 10%, 8%, 2%, एक एवरेज अकाउंट सेविंग्स USD ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 8% a year। This is if you are the luckiest person there, ਬਹੁਤ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇਗਾ, 10% a year ਦੇ ਦੇਗਾ। 10% a year mean
every $1,000 is making you $100 over a year, right? अगर आपने 100, so the best is you aim for 1 to 3% a day. $30 ਬਣਾਏ, 20 ਬਣਾਏ, 10 ਬਣਾਏ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ MES ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਏਮ ਕਰੋ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $50 ਡੇਲੀ। 50 ਬਣਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ यार, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये है लॉन्ग टर्म। सॉफ्टवेयर आपके पास आ गया है, लाइव बना लिया है, एरिया देख लो जिथों। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਲੂਸਡ ਦੀ ਤਰਫ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ। 25,000 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ $1,000 ਦਾ ਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ? 26,250, $1,250। ਹੁਣ ਯਾਰ $1,250 ਬਣਾਉਣੇ, ऑनेस्टली $100 अ डे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। अब चलो 100 ਨਾ ਏਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, 100 ਚਲੋ 100 ਹੀ ਏਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, $100 ਅ ਡੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚਲੋ 100 ਤੋਂ 150 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ $250 ਤੋਂ $300 ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਾ ਗਿਆ, 25 ਤੋਂ 30% your capital ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਐਗਰੈਸਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ 300, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਗਏ, ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ 300 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ $3,000 ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਰਾਫੇ ਯਾਰ ਮੈਂ $100 ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਟ੍ਰੇਡ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 9:30 ਤੋਂ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਟ੍ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ 110 ਤੋਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ 190 ਤੋਂ 95 ਤੋਂ। 25 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ, 25 ਪੁਆਇੰਟ ਐਵਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ $50। ਇੱਕ MNQ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, $50 ਬਣ ਗਏ, 2 ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ $100 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰ ਡੇ ਦੇ, $100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 3 MES, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਇੱਕ MES ਤੋਂ 100 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਿੰਪਲ 3 MES ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ $15 ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ। 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 15, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, मैंने कि $1.5 ਅੱਧਾ ਡਾਲਰ ਹੈ, $10 ਬਣਾਏ ਤੇ $1 ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ 4 ਮਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MES ਬਣਾਏ 6 ਤੋਂ 7। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਾਪ ਦਾ ਬਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਡਾਇਵਰਜਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਈ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤੇ $75 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ? ਕੀ ਹੈ? TP ਹੈ $75, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ $56। ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗੇਗਾ, 2 ਲੱਗਣਗੇ, 3 ਲੱਗਣਗੇ, 4 ਲੱਗਣਗੇ, 5 10 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮਸ 2 150, ਯੂ ਆਰ ਡਨ, ਕਲੋਜ਼ ਯੂਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਗੋ ਹੋਮ। ਜਿੱਥੇ 100 ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਗੋ ਹੋਮ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 23 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਉੱਤੇ 800 ਥੱਲੇ, 200 ਉੱਤੇ 600 ਥੱਲੇ। ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਥੀ ਫॉर ਯੂ, ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 2 ਕਰੋਗੇ, 4 ਕਰੋਗੇ, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਾਸ ਲਓਗੇ, ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ 3% ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇ ਨੋ देयर ਪਲਾਨ, ਦੇ ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਦ ਫੋਕਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ $50 ਪਾਏ, ਕੋਈ $30 ਪਾਏ, ਕੋਈ 60 ਪਾਏ। ਉਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ 20 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰੁਪਏ 50, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੂਸਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਡ ਈਜ਼ੀ। ਕਾਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 2 ਕਾਪੀਅਰ ਹਾਈਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਲੀਕੈਂਟੋ ਦਾ ਕਾਪੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ $125 ਜਾਂ $29 ਦਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ 5 ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ
ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਓ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀਅਰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ। 60 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, 500 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਅਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਆਵਰ ਓਨ ਮਨੀ, ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪੇ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਲੂਸਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ 5 ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 90 ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ? ਲੂਸਡ 5, TPT 5, ਪਰਡੀਆ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪੈਕਸ 20, ਬੁਲਨੌਕਸ 3, ਟ੍ਰੇਡਿਫਾਈ 5, ਫੰਡਡ ਨੈਕਸ 5, ਲੈਜੈਂਡਸ 5। That's really it. Yeah, my funded futures 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਪੀਅਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਪਲੀਕੈਂਟੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ।
मेरी आवाज़ अब जाएगी जी, क्योंकि मेरी माइक का बैटरी 2 बजे तक चलती है बस। मेरी अपनी बैटरी भी डाउन है इस वक्त। मुझे $25 चाहिए, मुझे नहीं दे रही मार्केट 25। नहीं नहीं नहीं, वो 8,000 वाला फिगर देखना है सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ सर। वो टीका लवाओ डैनियल भाई को, भर के लाने। ऑडियो इज ऑन। ਉਹ 30 20 ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈ ਜਾਓ हाँ जी हाँ जी, लेकिन ऐ ना करिया करो कि तुसी सारे लॉसेस तो बाद टॉप ऑफ द कैंडल लाओ ना, अपने ट्रेड ना करो। इट्स ए ਯੈਸ no problem जी, take care जी। Audio is back, it's just my mic kind of disappears। तेरे 195 ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ 150 ਤੇ ਮੈਂ 160 ਤੇ ਕਿਤੇ 150 30 ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਘੱਟ ਪਾਏ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਾਈਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ $80 ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਈਕਰੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ $100 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਨੰਬਰ 850 ਦਾ ਰੌਕ ਸੌਲਿਡ ਨਿਕਲਿਆ। 950 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 950 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 910 ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ that means we know how to read 240 properly now। 240 ਅਰਬੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਚਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਕ ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 240 ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡੇਢ ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਇਟਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੋ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਬੁੱਲਨਾਕ ਸਾਲੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 120 ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਧਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ 50 ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਰੂਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪਾਈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ 20 ਮਾਈਕਰੋ ਪੈ ਗਏ। ਹੋਲੀ ਮੈਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਪਲੱਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਏ $5 ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਪਾਏ ਫਿਰ 5 ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ $10। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ 50 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। नहीं 240 भी अच्छा नंबर है सर यार। 240 या 910 240 न्यूयॉर्क ਦਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਫੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ 10 ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, 10 o'clock ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ।
बड़ी तेज उत्ते ले गए ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੀ? एकदम 140 ਤੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲ 120 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 140 147 ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹਾਂ 116 ਨੂੰ ਤੱਕ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ 150 ਨੋ ਬਰਾਮਾ ਜੀ 241 ਤੋਂ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ 100 ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ 200 ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀਤੀ 150 ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 8 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 150 ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟॉप ऑफ द बार आ गया हाँ टॉप ऑफ द बार आ गया रिट्रेसमेंट डाइवर्जन पहली चल रही है या बिल्कुल टॉप ऑफ द बार तो जिसने लगाया था उसको 4 टिक्स तो मिल गए 5 टिक्स 6 टिक्स 75 बिल्कुल उत्थे टॉप ऑफ द बार ला दिओ ते हेलो नैनो नजर नहीं आया सर ਟ੍ਰੇਡਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ नो ਟ੍ਰੇਡਰ ਚ ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ ਐਸਐਲ ਪੀਪੀਓ ਐਸਐਲ ਆ ਗਿਆ हाँ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਚ ਨੈਨੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਚ ਆ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਚ ਨੈਨੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਨੈਨੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਖੋਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ NNQ ਕਿਉਂ ਯਾਰ NNQ ठीक है ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ MNQ ਖੋਲਿਆ ਨਾ हाँ ਉਹ ਖੋਲੋ अब MNQ गलती ना हो ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ MNQ ਖੋਲੋ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਚਾਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੇ ਟੀਪੀ ਵੀ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ लेकिन कापियर तो नहीं चलती ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ नहीं एक दे नाल चलता है ਹਾਂ लेकिन अगर ग्रुप दे नाल नहीं ਗਰੁੱਪ चलता ਦੇ ਨਾਲ
अच्छा वेरी नाइस चलो जी 150 आ रही है जा रही है 241 की तरफ 160 ਲੈ ਗਏ सर 116 तो दोबारा ਉੱਤੇ हाँ हाँ मैं ये करना हेलो सब at the office sure okay yeah I'll try okay bye yeah okay okay bye no I gotta get off the call first okay yeah okay promise okay bye. 170 wow नहीं 2 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 58 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈ ਗਾਡ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਗਏ ਉੱਤੇ ਇਹ ਓਵਰਬॉट ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ नो प्रॉब्लम जी ठीक I know
Hello? Yes. Half an hour. Okay, bye. Yeah. Yeah. Yeah, I swear. Half an hour. Okay, bye. देखो कहाँ पर आती है जी। लेकिन सर मार्केट ना अब थोड़ी सी रिदम स्लो हो गया। हाँ अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ बहुत स्लो हो गया काम भाई, बहुत स्लो। 180 240 पे आए यार। ये लास्ट टाइम हाई है न्यूयॉर्क का 200 सॉरी 224 तक गया था, फिर जा रही है जी 180 से सीधी 25 पॉइंट ऊपर ले गए। हाँ ये 200 ते आ गई ऑलमोस्ट। हेलो, हाँ जी भाई साहब। हाँ DHL से आएंगे UAE से। हाँ वो ले लें, मैं साइन करता हूँ। ओके नहीं मैं उसको देखता हूँ, शाह साहब ने भिजवाया, मैं देखता हूँ आके। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। एक सौ नब्बे। मेरे ख्याल स्पीच के दौरान कुछ बोल रहे हैं। 197। ये दोबारा 195 से 5 पॉइंट दिए।
भाई घर ही बैंक च 2.8 ਦਾ ਵਿਕਿਆ 22 2 ਵਿਕਿਆ 1.6 उफ, $11 ਲੱਖ वाइप आउट हो गया। ਇਹ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ हाँ हाँ मैं या बैंक ਦਾ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਕਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फिर दोबारा ले गए। Any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the U.S. dollar system. Every country has a defined timeline to shut down activities we have identified. If they do not take action, we will do so unilaterally through Treasury authorities. For example, every branch of Bank Melee must be shuttered and dark. And let me be clear, any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed 214 from the US dollar system. पहुंच रही है। A guy gets a mystery package in the mail. 224 तोड़ेगी तो इक्वल हाई 224 है 15 मिनट का। Mike walks over to the fridge, grabs a bottle of cold brew, and gets ready to take a sip. 215 240 ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ 240 ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਾਲ हाँ 240 तो कुछ 215 ਤੇ आ गए।
Hello? Hello? Yeah? No, I know it'll show mine. Okay, bye. Half an hour. Bye. 220 जी. नहीं ये तो दिल्ली नहीं कर रहे. 221 बाई इक्वल हाई 5 मिनट का और 30 मिनट का आ गया है. देखते हैं वहां से कुछ लेते हैं. तो भाई तो देगी 10 पॉइंट. पिछले इक्वल लो हाई दे थोड़ा जो थलो. लेट्स सी. हेलो. That's fine, no worries. Yeah, exactly. Yeah, please. Yeah, thank you. Okay. So 222. 100 पॉइंट सीधा लगे जी. नहीं है कि 225 तोड़ के 240 ला दे फिर देखांगे. हाँ कि 15 मिनट ते 30 मिनट का इक्वल हाई हो है 240. The new sectoral sanctions determinations issued today target 5 of Iran's most vital lifelines that it exploits in other countries: digital assets, technology, gold, aviation, and shipping. These measures broaden secondary sanctions risk for anyone foolish enough to continue Thomas? Yep, some kind of interference. Go check it out. Let's line up here. Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. हेलो जी. नहीं भाई वेट कर रहे हैं 240 का. देखो
Guys, wait for 240, nothing before that. We're close to our area of interest. और इधर 90 का वेट कीजिएगा. 223, $107 move one way up. नहीं कोई अपॉइंटमेंट वगैरह थी तो आशर भेजा मैंने उधर. आशर गया है. 223 equal high almost. थर्टी मिनट का इक्वल हाई. यही डर होता है यहाँ से निकल ना जाए. टू 23. टू 31, 232, 233. मैं 240 पे बैठा सर. Come on, man. 233 से भाग गई. नहीं ये नहीं एवरेज है. वो तो हमें 150 तो बैठा है. हाँ नहीं मैं शायद उत्ते करा. 250 जावे ना क्योंकि इधर खराब हो जाना कम है यार. अल्लाह की कसम 233 तो मुड़े आई. मेरा ख्याल है काम शुरू 230 हो गया तो काम हो गया शुरू. एक शायद एक बारी और लावे 117 पॉइंट तो बाद शायद 1 मिनट की डाइवर्जन ला दे तो 240 ਨੂੰ तो करके आ जाए. That's the only I have. हाँ नहीं वो तो फिर 240 तो 480. नहीं न्यूयॉर्क हाई कितना है. हाँ ये वर्स कम वर्स गई ना. 283 284 तक जा सकती. देखो लेट्स सी 233 तक गया जी. 221 अगेन. ठीक ले लेते हैं. नो प्रॉब्लम. पहले अपना ट्रेड देख लीजिएगा ब्रेड के चक्करों में. क्या ट्रेड देख लेना. तीसरा ट्रेड दिन का आया जी 233. न्यू ईयर का हाई क्या था. एक सेकंड. 243 244.
चलो जी, यहाँ से अगर तो गई नीचे तो फिर तो काम खत्म। अभी तक सारे बेरिश हैं, बेरिश बेरिश बेरिश। 1 मिनट बुलिश। चांस तो लग रहा है कि हमें दे देगी यहाँ से, मीनिंग 240 तक कुछ ना कुछ तो दे ही देगी। 233 तक गई है, वैसे हाई है 245। ऑलमोस्ट $85 मूव हो चुका है, $100 240। नहीं नहीं, थल्ले थल्ले देखो कितों आ रही है, 950 तो। ट्रेड ना मिस कीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ हाँ, पहुंच के टाइगर के साथ घूम रहा है, टाइगर के साथ घूम रहा है। हाँ, मेरा स्टेटस चेक करें। एक नैस्डैक भी है यार, ये ज्यादती कर गया हमारे साथ। कम ऑन यार, बकवास हो गई है। 233 से मुड़ गई। उनको लगता है यार कि बस राफे ने ट्रेड डाल दिया, बस जो है ना अब। दिस इज नॉनसेंस यार, 240 पे बैठे थे, 235 से आ गए, और देखो 202 पे आ गई। एक ऑप्शन ये है कि दोबारा मिड बैंड 1 मिनट का टच करे 180 से, वापस 245 बनाए, डाइवर्जन बनाए, फिर नीचे आए। और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है माजिद भाई। बिल्कुल बकवास है। फिर अच्छा, A polar bear's true size becomes obvious when you compare it with other things. An adult polar bear can stand nearly 10 feet tall on its hind legs, which is about the height of a one-story building. They can also weigh up to 1,600 pounds. To avoid breaking thin ice, some smart polar bears will even lie down and slide across. This happened just after 9:30 near Grand River Boulevard and Shepherd. Toronto police say a man in his 40s was riding a motorcycle when he was struck by a vehicle and was later pronounced dead in the hospital.
सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स बकवासियात है 180 पे आ गई। और ट्रम्प लाइव बोल रहा है जी। Jim, thank you very much. Thank you. Look good. Arkansas Governor Sarah Huckabee Sanders. Thank you. Thank you, Sarah. Chairman of the House Education Committee, Jim Walker. Thank you very much, Jim. Good job. And our press secretary, mother of two. And, well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. What? China's humanoid Olympics is already breaking multiple world. Hey, this is breaking news. Treasury Secretary Scott Bessent just handed down new sanctions on Iran and their trade partners. Those who enable Tehran do not discount the cost. असल में इनसे लड़ाई पूरी हो नहीं रही ना, तो वो कहते हैं कि अब यही ऑप्शन है। वो देखिए मिड बैंड टेस्ट हुआ 190 से 180 से टेस्ट हो गया। अब नीचे आ जा, ग्रीन बॉक्स में आ जा। नैस्डैक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट वापस आ गई। हम डिसिप्लिन हुए हैं तो मार्केट खराब हो गई। हाँ 10 पॉइंट पहले मैं पहले जंप इन कर जाता। नहीं 110 साल तो मैं जंप इन किया है। Proficient in reading and math. That was under the last administration. Under the Trump administration, we're systematically ending every single one of these radical left betrayals, and we're putting the parents back in charge. They're the ones that love our children. They're the ones that should be in charge. So immediately upon taking office, I signed an executive order to ban critical race theory and to ban transgender ideology from public schools. That was a big deal. We banned men from playing in women's sports. That was so easy to do. I don't get it. They're still arguing. They're still fighting. I saw a Democrat congressman the other day fighting an anchor that was, I would say, somewhere in the middle, but fighting an anchor on men playing in women's sports. And I said, I hope they keep doing that, because it's got to be impossible to win a race politically. Just crazy. I've never seen anything like it, but it continues out there. Although we've had big court victories, as you know, and we've largely stopped it. Sorry guys, it didn't go to 240. It returned from 235. It's okay. कुछ नहीं कर सकते, और ये 90 पे नहीं गई, कुछ नहीं कर सकते। या आप कुछ करोगे तो 50% चांस है कि कुछ हो जाएगा। ओह मैन, सॉरी यार आपको। नहीं मैं तो पानी लूँगा। सॉरी आपको तंग कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? ये एक्स्ट्रा काम। ये बस मंडे। तो आप मुझे स्वाप कमाने का मौका दे रहे हैं, और मुझे पानी पिलाना ये करना सर, ये तो मुझे मैंने कौन से इतना गुनहगार। 8 सितंबर को बैक टू नॉर्मल, 2 बजे ऑफिस बंद। मैं क्या 8 बजे बंद, मीनिंग सितंबर 8 ना 2 बजे सारे भाग जाएंगे। Freedom tax credit, the largest ever expansion of school choice, and we want, thank you, and we want every parent to have the power to send their child to a high quality school that shares their values. It's so important. With us today are Caleb and Josh. और ट्रम्प थोड़ा सा 240 तक की। मैं जी 240 पे बैठूंगा जी असीम भाई, कोई मसला नहीं है। 50 पॉइंट है यहाँ से। We are at war. The Islamist terrorist regime in Iran
has attacked our country, not just once, but 3 times. Back, but you have to add a place top 3 in the world. थैंक यू जी वाह जी ओ इतना ज़्यादा मैं उधर रखी ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ रवि ने बड़ा अच्छा मेवा देता है मैंने बदल रहे हैं ਭਾਈ ਨੇ ਚਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬਸ ਕਰ ਇਤਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ मैंने कहा 241 से एंटर करूँगा 30 मिनट का मिड बैंड है इट्स ओके न्यूयॉर्क का हाई है बगैर 235 से चली गई अब मेरा ख्याल है डन है ऊपर का एक ज़माना था 200 पॉइंट मूव हो रही थी मिनट में हाँ जी ग्रीन के फिब में दे देगा जी 150 से $30 और आ जाए नीचे थैंक यू भाईजान आपने हमें सावर डो पे लगा दिए सावर तो इसने लगाया है जतिन ने हाँ जतिन पहले लेकर आया आप नहीं खा रहे हो भाई ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਕੱਲ ਭਾਈ ਕੱਲ मैंने जाना ओके आज मैंने हाशिर को बैठा हैप्पी जगह हाशिर से मारा हैप्पी की जगह आज ना हैप्पी था न टिलप थे तो हाशिर गया पता नहीं क्या बनवा के दिया हाशिर गया तो कोर्स नहीं ऑफ कोर्स नहीं मार्केट के साथ ही चलना है ना हां लेकिन फिर हैप्पी के साथ एक हस्बैंड वाइफ बैठते हैं जो इधर ही से हैं वो उनके भी बड़े अच्छे एनालिसिस हैं ठीक करते हैं ना हाँ सोते हैं ये सो भाई नहीं पहले रे पहले हाँ मेरे भाई 2 ट्रेड डाले परफेक्ट गए हैं एक तो वो S1 के नीचे वाला जो हाँ। आपको दिया था वो मिल गया और एक 195 जी मैंने कहा भाई कम ट्रेड हो जाए हों परफेक्ट हाँ लेकिन जो डॉलर का एवरेज होगा ना वो मेरे स्टैट्स खराब कर देता है आज वर्णा भी किया आपने
दो ट्रेड $43। नाइस। अब हम अपना जो ट्रैप है ना वो शॉर्ट से उठा के लॉन्ग में ले आएंगे। ओके। चेंज करते रहते हैं ना, हाँ कभी फूड को इधर फंसा देते हैं। ये ना वैसे सेलिंग में चाहिए। एग्जैक्टली। हटा आज जाने से भी यही बात है कि सेल में फ्रॉम टॉप। 2 दफा टॉप आया, तीसरी दफा वरना ये बड़ा प्यारी स्विंग थी ये। 240 से 60 पॉइंट आई है। पहला ट्रेड ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ 110 ਦਾ ਉਹ 108 9 ਤੇ ਮੁੜ ਗਈ अभी अभी कौन सा दिया था 130 था कौन सा? अब मैंने दिया था 240 का हाँ और 138 ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਏ 2 2 3 3 ਮਾਈਕਰੋ 105 104 108 106 ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਜਾ अभी आया था हम्म, राती पानी काउंट लेते हैं I know. 50% ऑफ से गए और 700 बना के मैं हट गया। मैं कहा चल ठीक है। उन्हें हम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, पता क्यों? 3 डे पास में। उन्होंने 3 डे कर दिया ना। नहीं नहीं जो 50 तो बताओ फिर टारगेट लाइन है ना तो हाँ। अच्छा अच्छा 700 बनाए। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਖਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 500 ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ 500 ਤੇਰਾ ਮੌਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 500 ਨਾਲ मेरी दौड़ ही ऐसी लगी मेरे को 5 हो जाए पास 5 हो जाए लाई ना हाँ। दौड़ ही लाई है दौड़ च डिग जाना मैं विच भाई रामनाथ पता किन्ने दो अकाउंट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਦਾ 6500 ਕੀਤਾ ਮੈਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं आज लेकिन 2 फायदे हो रहे हैं, अकाउंट नहीं चला अकाउंट नहीं सड़ रहे और नेगेटिव डेज नहीं जा रहे। और क्या चाहिए मैं यार? ਅਸੀਂ ਪੀਏ ਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਡ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ आपको तो पता ही नहीं है मैंने पीए में करना है। प्यार प्यार से कॉपियर भी उतार देना। हाँ। ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਗਏ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਡਾ किधे? ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਯੂਟਿਊਬਰ अच्छा ਦੋ ਪ੍ਰੋ ਡਾਈ ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਤਿੰਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਫਰ ਹੀ 14,000 ਡਾਲਰ ਦਾ वाह ਪ੍ਰੋ ਚ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਰਿਵਰਸ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲ ਖੁੱਲੀ ਟਕ 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 15 ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਦੇ ਸੀ 15 ਮਿਨੀ ਪਾਏ ਦੇ ਸੀ 45 ਮਿਨੀ ਤਿੰਨ ਅਕਾਊਂਟ ओए 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 ਟਕ 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 ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 13,000 ਪਲੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੱਸ नहीं तो क्या एक फंडेड अकाउंट थे कि अपने ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਚ रोज कितने वाला सीगा जब और को 1.5 लाख करे अच्छा 1.5 लाख उसके पास है वो गैम्बलर है वो तो आप कहना करना ना गैम्बलर कहना रोज दिन में दिहाड़ी गैम्बलर की ज्यादा किस्मत अच्छी रहती है। कहता 10 रीसेट करना ना अगर दिहाड़ी एसी ऑफ कर दिया ऑन कर दूं दोबारा? नहीं नहीं ठीक है रहता ठीक है, ठंड हो गई है। ओके। बगैरत की बच्ची कहाँ आ गई यार? अल्लाह की कसम गालियां सुनेगी मुझसे। 233 से 168 पे आ गई। खमान मैं इतना वेट किया। अब जो बता दसा ने 220 तेने क्लस्टर बनाना शुरू करता उथों डिगदी निकलना This sucks man. Missed it by 7 points, 10 points. अब कौन ही एनर्जी इसमें? जो तो एवरेज जल्दी कर रहा हो वो फंस जाते हो। 170, 68 सीधा जा भाई तू 28,910 थे।
164. किधर पत्नी कोई नाम भी बात ले रहा है ना, मैं भी उनके साथ खेलता हूँ, फोन आता है मैं आंसर करके चुप रहता हूँ, सांस ले रहा हूँ। I know this is you. अगर no, I'm not. I'm not. इतना मैं तंग कर रहा हूँ. You don't have to pay us back. You know that, right? No, I'm not. We सोचते हैं किससे मतलब तू ही बेले बता तो बड़ा बेला है मैं चुप करके बैठ जाता हूँ. वो भी अगर से जब बिल्कुल थक जाते हैं ना. 233 से 164. खुदा की कसम दिल रो रहा है. पूरे पूरा वाली कैंडल खोल के देखो कितने मूव कीता था 164 63 165 163 भाई पूरा वाली कैंडल खोले थोड़ी सी देखियो कितने मूव कीता कुछ भी नहीं आया. मैं जी शामी एनक्यू करूंगा बस. और नहीं हो नहीं 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 हो, मैं गलती नहीं. खुदा गुस्सा ना करो. नहीं जी बहुत बेशक हो गया. मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बना है. ए देखो हाफ में आई है बस. कुछ भी नहीं आया. कुछ भी नहीं आया ना. पिवट ते आई. अब तो रिजेक्शन है क्या ये ना देखिए कौन करेगा वो निकाल ना वो निकाल हाँ हाँ चार ए देखो 235 तो आई है. हां ਸਾਡਨ ਇਹ ਤੇ 210 ਤੇ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ. ਇਕੁਅਲ ਲੋ. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਾ 914 ਤੇ. अनिगो आप लोगों को टेस्ट कर सकते हैं आपको बताऊं इसने कहाँ जाना है. हाँ जी 750 पे. हां अब मैं अगला नंबर दूं रात का. वो 1440 का आप उसकी वजह से कह रहे हैं. अच्छा कौन है रात का क्या नंबर दे रहे हैं. रात का 750. यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं सर. चंगी तरह कराएगी Hello. Yeah, wait. It's showing me 1 second. Wait. 12 more minutes. Bye. I don't know. 12 minutes. Bye. Yeah, it's a surprise. Bye. 5:30. Hi. Okay, bye. Anji. No. Okay, bye. You're not even in the car. In the office. What's up? Tomorrow, what time are you going to be home? Normal time. Hmm. Okay, bye. Yeah. What? Okay, bye. I'm not even talking to you. मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो आपने हियर क्या करना है. मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं बोलूँ क्या जी. कह रहा हूँ आप तो गाड़ी में भी बैठा 5 मिनट आ गए. कहते तो गड्डी चिरी बैठे. मेरा स्टैंडर्ड आंसर है 5 मिनट्स. मैंने सिर्फ फैन ऑन किया है. ठीक है
नो प्रॉब्लम जी। लो जी टॉप ऑफ द फिब पे पहुंच गया है। लेट्स सी बॉटम ऑफ द फिब जाता है। जब से हम सीधे हुए हैं ट्रेडिंग में मार्केट स्लो हो गई। घर से कर रही जो जो नंबर के साथ करेंगे वो अजा बॉक्स के थले 144 ते है। मैं नहीं कटता तेनू। अब बातें ही करना रह गई नैस्डैक से। एक बारी आ जा यार बॉक्स के नीचे 100 140 तो रुक जाए। चलो 122 116 तक तो चलो। एशिया के लो तक तो चलो। क्या कर रही हो यार तुम। ईएस का 90 पे रखा था। 76 90 पे नहीं। ਹੁਣ ਮਿਡ ਬੈਂਡ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ 175 ਤੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ 175 ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। टेक प्रॉफिट पे। हाँ मेरी ये वापस ऊपर गई तो 175 सही है। 175 ये 1 मिनट का मिड बैंड है वो। आ जा यार। हाँ नहीं वो असीम भाई 1 मिनट का यही बुचाड़ बन रहा है और तो मेरे पास कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा।
1 मिनट 175 पे आए तो मैं कुछ करूं। और तो कोई चार्ट नहीं। Equal low and 1 minute mid band is falling within the same category. हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आर यू रेडी फॉर योर इंटरव्यू विद शालिनी मैम? हाँ जी, हाँ जी, रेडी हैं जी। ओके सर, वी हैव न्यूज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, देन आई विल टेक यू ऑन एयर। बस खत्म नहीं होने नो प्रॉब्लम जी। सेट इट डाउन हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। क्या और कहा कि क्या के सभी प्रीमियर्स को इस वक्त यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए। कोर्ट ने ट्रंप को लेकर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कनाडा को अब फुल स्टीम आगे बढ़कर जवाब देना चाहिए। उधर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब अगले साल से कार्स एंड ट्रक्स पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने की धमकी दे डाली है। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ऑनगोइंग ट्रेड वॉर की वजह से कनाडा में लगभग 87,000 जॉब रिस्क में पड़ सकती हैं। ट्रंप ने वीकेंड पर कनाडा को लेकर ये भी कहा कि कनाडा स्टेट होने के बेनिफिट चाहता है बगैर स्टेट बने। उधर टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ ने प्रीमियर कोर्ट से कहा कि इस वक्त उनका पहला काम होना चाहिए टू फाइट विद ट्रंप, न कि टोरंटो की बाइक लेन्स हटाना। बता दें कि ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील ने हाल ही में पोर्ट गवर्नमेंट को फ्लोर स्ट्रीट, यंग स्ट्रीट और यूनिवर्सिटी एवेन्यू से बाइक लेन्स हटाने की परमिशन दे दी थी। पंजाबी म्यूजिक फैंस के लिए एक बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला की मौत के 4 साल बाद उनकी म्यूजिक लेगेसी एक नए रूप में स्टेज पर लौटने जा रही है। उनका साइंड टू गॉड होलोग्राम वर्ल्ड टूर टोरंटो से शुरू होगा। शो 8 अक्टूबर को स्कोशियाबैंक अरीना में स्केड्यूल्ड है, जिसमें 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस, मूसेवाला के ओरिजिनल वोकल्स, सिनेमैटिक विजुअल्स और स्टेज इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। बता कि मूसेवाला ने अपने शुरुआती वक्त ब्रैम्पटन में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर बिताया था और 2017 में उनका सॉन्ग सो हाई काफी पॉपुलर हुआ था। CAMH की लेटेस्ट सर्वे में कुछ राहत की खबर सामने आई है। ओंटारियो में ग्रेड 7 से 12 के 46% स्टूडेंट्स ने 2025 में मॉडरेट से सीरियस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रिपोर्ट किया। हालांकि नंबर अभी भी काफी है, लेकिन 2023 में यही फिगर 51% था, यानी पेंडेमिक के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। अंत में आज का वेदर अपडेट। टोरंटो में आज स्काइज रहेंगी मेनली क्लाउडी और करीबन 6 घंटे तक ऑन एंड ऑफ शावर्स की पॉसिबिलिटी। और आप अगर बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला साथ रखना बेहतर होगा। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी 4 बजे तक CMR FM 101.3 पर। गुड आफ्टरनून। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812। लाइफ टाइम में कमाल कर दिया, पैसा कमाना अब आसान कर दिया। जहाँ पूछो पैसे से हमको माला माल कर दिया। लाइफ टाइम, जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। Call 905-206-1008, that is 905-206-1008, or visit winlifetime.com. Win Lifetime. जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम यानी जीतो जिंदगी भर, एक फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं एक बार फिर से। और इस नए हफ्ते की नई एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे, ताकि जो काम आप पिछले हफ्ते नहीं कर पाए आपके लिए बहुत बड़ी सी एब्सोल्युटली फ्री अपॉर्चुनिटी है। लेट्स हियर इट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी। राफे जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स जी। बहुत बहुत शुक्रिया राफी जी। कैसा रहा ये पास्ट वीकेंड और ये जो उथल पुथल मची हुई है कनाडा और यूएस के बीच, इसमें आपकी, जैसा मैं हमेशा पूछती हूँ कि इस वक्त आपका सॉफ्टवेयर
ने किस तरह का प्रेडिक्शन दिया था और कितना सक्सेसफुल रहा इस वक्त? जी एब्सोल्युटली, सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारे जो भी मेंटर्स बैठे हैं वो लाइव एनालिसिस करके जी आपको प्रोडिक्शन देते हैं। तो आज सुबह से वंडरफुल जितने भी आज के ट्रेड से रियली 2 से 3 ट्रेड लिए गए और दे वर 100%। दैट इज वंडरफुल। तो कभी कभी राफी जी जैसा ट्रेडिंग आपका फ्लो चलता है, सब लोग ट्रेड करते हैं, हजारों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें अगर अचानक से कोई इस तरह की खबर आ जाती है जैसे यूएस और कनाडा की ट्रेड टॉक्स बीच में ब्रेक हो गए या इस तरह की चीजें, तो उस वक्त क्या असर पड़ता है ट्रेडिंग पर, क्योंकि आई बिलीव ट्रेडिंग का एक सीधे रिश्ता होता है लेटेस्ट खबरों के साथ। जी एब्सोल्युटली, जिस तरह आप हाईवे पे जा रहे हो और एकदम आपका वेदर सनी से एकदम बारिश शुरू हो जाए तो हम आपको एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट के सारे टूल्स सिखाते हैं कि इन केस एकदम मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, आप कोशिश करते हो कि किसी ब्रिज के नीचे गाड़ी खड़ी करके ज़रा तूफ़ान को रोक लें। इस तरह की न्यूज़ कुछ दफ़ा तो स्केड्यूल्ड होती हैं और कुछ दफ़ा जो जो विदाउट एनी न्यूज़ आ जाए उसके लिए हम आपका सॉफ्टवेयर को बाकायदा बताते हैं व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अच्छा वंडरफुल। अब राफी जी मिलियंस ऑफ लोग इस वक्त आपकी आवाज सुन रहे हैं हमारे शो पर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस काम को करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या हमारा स्किल सेट होना चाहिए, और वो लोग जिन्होंने कभी ट्रेडिंग करी ही नहीं है, ट्रेडिंग करती भी नहीं आता, क्या वो लोग भी ये काम कर सकते हैं? हमारे ऑफिस में सही है, अगर आपकी पल्स चलती है तो हम आपको ट्रेडर बना देंगे, वो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ना कंप्यूटर का बैकग्राउंड चाहिए, ना इकोनॉमिक्स का, ना फाइनेंस का, ना आईटी का, सिर्फ आप मेरी इंस्ट्रक्शन सुनने की रखें। यू शुड बी एबल टू सी व्हाट द सॉफ्टवेयर इज़ टेलिंग यू, और फिर आपकी जो है आपने अमल कुछ करना है, खुद से कुछ करना नहीं है, मेंटर आपको बैठा दिया जाएगा। सो एनीबडी कैन लर्न एज लॉन्ग एज यू आर द एज ऑफ 18+। एंड अपने पैसे प्लीज़ नहीं डालें, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको एज ए ट्रेडर हायर कर लेती हैं, तो आपका अपना पैसा की इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। वेरी नाइस। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, पैसा कमा भी रहे हो, बेस्ट भी नहीं कर रहे। दिस इज अ वन वे ट्रैफिक आई बिलीव, व्हिच इज वंडरफुल। अब कैसे शुरू किया जाए राफी जी, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप, सैटरडे दोनों ऑफिस में सेमिनार है 1 PM, एंड देन यू आर एबल टू कम इन एंड सी। अगर आप नहीं आ सकते तो मंडे टू फ्राइडे आप हमारे ट्रिनिटी के ऑफिस में आके लाइव ट्रेडर्स के साथ बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और सारे प्रीवियस हिस्टोरिकल रिजल्ट्स हम लाइव अपलोड कर देते हैं। यू हैव 3000 आवर्स ऑफ रिकॉर्ड्स टू सी, नो प्रॉब्लम। ओके वंडरफुल। तो वेल दोस्तों विजिट कीजिएगा वेबसाइट winlifetime.com और नंबर है 4905 206 1008, that's 905 206 1008। बिल्कुल फ्री सीट बुक कीजिए आज और अभी कमिंग सैटरडे एट 1 PM इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा। राफी जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी फिर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Fib worked 100%. So, hello? Yeah, I could just go outside. It says delivered. Okay, bye. सो फिब इज़ डन। इतनी बड़ी स्विंग के बाद फिब ठीक रहता है जी, छोटी सी स्विंग के बाद नहीं। अच्छा पॉइंट दे गया, 140 से आपको 10 पॉइंट दे गया। इक्वल लो लीजिएगा, मिड ना लीजिएगा, 170 ना लें,
थोड़ा सा ऊपर से। हाँ मैन माजिद भाई ये ट्रेड मिल जाता ना अब मैं फिर ਤੁਸੀਂ कहते ਹੁੰਦੇ ना ਇਹ बस मिल जाता ना ट्रेड ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ मैं 100 मैं ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 240 ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਵੇ ਲੇਕਿਨ मैं लिया ਹੁੰਦਾ ना ट्रेड 90 पॉइंट सी 90 में लेने तो नहीं सी लेकिन एटलीस्ट 20 तो ले लेता यार। पता नहीं हाकम साहब राती कितना मिनी पा लेंदे ने यार। अजी ट्रेडिफाई ने सबसे बड़ा अकाउंट कर दिया 3 लाख वाला 14,000 टारगेट 6,000 में $500 का अकाउंट है। उफ तौबा 170 है। मिड बैंड 1 मिनट का 170 पे आते हुए कसम कई दफ़ा लगता है मैं स्टार स्पोर्ट्स का कमेंटेटर हूँ और मिसबाल हक बैटिंग कर रहा है। हाँ जी इक्वल डिसअपियर हो गया जी। अब मिड आ रहा है सिर्फ क्योंकि आपकी कैंडल कंटिन्यूसली डाउन गई है। ओहो यार फिर मैं कहता हूँ मार्केट दबा देता ना तो फिर लेकिन अगर ये चली जाती तो ऊपर नंबर पता है क्या पड़ा है 480 तो नाइट का हाई है ना तो 480 माइनस 236 टाइम्स $2 ये $500 का माइनस ट्रेड हो जाता। नो वरीज नो प्रॉब्लम इज़ ओके। अभी इसके बाद बहुत नंबर है जी नीचे इसने तोड़ना है। अभी 122 को तोड़ना है 116 को तोड़ना है फिर जाके कहीं 947 28 947 को तोड़ना है। इट्स ऑलमोस्ट 77% नीचे आ गई ये स्विंग। कोई बात नहीं। इंडिया की कोई खबर है कोई आईफोन के चक्कर में कोई मसला हो गया। हाँ लाइक ए फैमिली खाना उसमें मेरा कॉटलेज होता है, चिल्ली होती है कॉटलेज, उसके अंदर मिस होता है, पटेला होता है, इससे Cherokee 4512 Romeo, mayday, 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 we lost our engine. We're just coming up over the shore.
देखो मिड बैंड से देती है कि नहीं, आ तो रही है 142 से 166 पे आ रही है 166. Maybe equal high would be a better entry, like 190. Again mid band पे नहीं आई. अबे 910 पे आ गई ना ये, फिर मैंने नहीं देखा. फिर जो भी करेगी नैस्डैक करेगी, मैंने क्या करना. Oh man, you wanna $90 की स्विंग है, इसका $45 50% बनता है. So 29 142 plus 45 190 से पहले नहीं जी, 190 से पहले नहीं, 190 से पहले नहीं. मिड बैंड पे रुक सकती है बट 190 से पहले नहीं. Move your order somewhere around 187 if you are doing scalping. $163 मिड पे आ गई है. तो दिस स्विंग $90 की ये स्विंग है, इसका 50% एटलीस्ट वापस आ लेने दें, तो आपको पड़ेगी 187 पे. अभी तो मिड टेस्ट हो रहा है, मिड भी 165 था. Okay, okay. Mid band gave you 4 points so far.
वैसे स्विंग वड्डी होवे ना 50% भी स्विंग ठीक है मीनिंग ਹੁਣ देखो 90 पॉइंट ਦੀ ਸਵਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ 50% 45 ਬਣਿਆ ਤੇ 180 ਤੋਂ ਸੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ग्रीन मीनिंग पॉजिटिव जा रहा है Property tax arrears in Cambridge have climbed high. We haven't collected 38 million. That's a lot of money. The issue came to light after a motion by Cambridge Councillor Helen Schwery, who pushed for a closer look at unpaid property tax and related late fees owed to the city. So it is. It's tragic. It's scary. A document from city staff shows the amount, 38 million, doubled over the last 5 years, and it stretches across more than 6,000 properties in the city. The city of Cambridge told CTV News they aren't able to provide a breakdown between residential and non-residential tax arrears. Councillor Schwery says the city is upgrading its software to get that missing data by the next budget. And that's also very important because, say, for example, bulk of it is business. What are we doing to help our businesses? Why? So this video went viral because it looks like she's walking on a treadmill because she keeps taking steps, but the podium doesn't get any closer, and the flags behind her look frozen in place. News in the United States of America, we're running out of oil, and it is not good at all, and it's all because of Trump's war in Iran. The United States now has just 41 days left of crude oil in its inventory. That's never happened in 50 plus years. You can arguably say that's never happened before because the Strategic Petroleum Reserve has only been around for about a half a century. We are now at a point, the lowest ever in a half a century, crude oil in our Strategic Petroleum Reserve. What does that mean for you? Well, this war in Iran doesn't seem like it's ending anytime soon. They're announcing economic D-Day on Iran today. And so what happens next? Gas prices, oil prices are all going to continue to go up.
kiss my ass. So let there be no ambiguity as to the position. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound. Morning. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Chuck it on that one. His house was in the way of the new road. They needed to bulldoze it, so they offered him over. 3:30 candle. So don't enter. If you must do a trade, the best is 210 and then maybe 187. All right, another half an hour.
All right, guys, we're kind of getting close to our session ending. है हिमांशु भाई, ये अगर ये लिया होता ना, नास्डैक में हाँ, फिर मेरी आँख खुल गई। नहीं, ट्रेड बुरी नहीं थी, 200 नंबर बहुत प्रिसाइज था। कुछ है ही नहीं है जी बोलने के लिए, आई हैव नथिंग टू से, तो इस वजह से आज के $300 माइनस की वजह से नैस्डैक, इसका मतलब है ट्रेंड नीचे ही चल रहा है, अभी तो नीचे ही बेरिश ही चल रहा है। हाँ जी, अब मैं आपको नंबर रात के लिख जाता हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया। लो जी, सेलिंग होगी तो होगी 300,
50 से, ठीक है जी। 350 से सेलिंग हो रही है, 350 से 370 सेलिंग होगी अगर रात को 6 के बाद आ गया। 350 37 पिवट बनता है हमारा, तो पिवट से थोड़ा सा ऊपर, और अगर बाइंग हुई बाइंग हुई, पहला नंबर तो 28,910 है, आई एग्री। दूसरा नंबर 910, 820 ना करना, 760, 910 तो बाद ना, अगर 910 हिट एंड रन हो गया फिर अब इसी लवांगे। अभी बताता हूँ मेरे भाई, $750, डेफिनेटली 750 ब्लू बॉक्स का बॉटम है डेली का। 28,750 से 770, दैट वुड बी गुड। और इसको भी तोड़ गई तो फिर दुआ करो कि रुक जाए कितने। डेली का बॉटम है एक्चुअली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, नहीं दसना मैं। सर 910 तो वाह नंबर मिलने। नहीं 910 नंबर ज़्यादा आपको मिलेंगे 750 से, 750 तो मिल जाएगा कुछ। अब हम देखें 240 का चार्ट, उसको पढ़ना शुरू करें। 750 बिल्कुल ठीक है, 100 तो उस तो नीचे तो फिर काम खराब ही है, बेरिश ही है। या 910 एंड देन 750, ये आपके आगे मॉर्निंग के नंबर। हाँ जी सॉरी, 28,000, सॉरी रियली सॉरी, 28,750। 116 मैं नहीं ले रहा जी हिट एंड रन, इसका टाइम बहुत कम रह गया। 8 नेक्स्ट 15 मिनट में इतनी बड़ी स्पाइक आनी है इधर, और तो ना लीजिएगा। वो देखिए ना गिर रही है। तो अगर मे बी इक्वल लो आपका बन जाए 947, 950 इक्वल लो, बट अभी तो 116 है, फिर उसके बाद 110 है, अभी बहुत नंबर पड़े हैं जी। और मैं कल ना एक्सेल पे लिखना शुरू करूँगा, मल्टीपल आपको फिर हाईलाइट भी करना शुरू करूँगा। अगर सेल करनी है तो 240 अभी भी ठीक है, 240 ठीक है यार। हाँ तो हमारे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं, ठीक है। नहीं 350 ठीक है, 240 कह रहे हो, छड़ दिए। लो जी, आपने कहा छोड़ दिए हमने। या और इधर थोड़ा सा मैं ज़रा सपोर्ट 45 पे ठीक है, लेकिन ईएस को मैं देख लूँ। ईएस 90 ठीक है जी, ईएस शुड बी ओके टू गिव अस सम पॉइंट्स। 76, हाँ की देखिए, जीरो लाइन तो ना करो, मिड तक करो। नहीं एक नहीं, वो प्राइस वाली है, वो एवरेज वाली है, वो बहुत थल्ले चेंज होती है। हाँ 1 पॉइंट, अच्छा बिल ठीक है, फिर तो मजे भाई
हाँ जी, नहीं चलती है, लेकिन मुझे सिर्फ 4 टिक से मिलते हैं। हाँ, वो देखें, हमारी किस्मत देखो कि 230 तो 120 थी यार, सिर्फ 8 पॉइंट दूर। इतना वेट किया। नहीं 2 ट्रेड लिए हैं मैंने पूरे दिन। वो भी मैंने धक्के से लिया मार्केट दबा के, तो वो चला। जतिन कहता मैं हूँ 105 से, मैं क्या यार मैं 110 पे बैठा हूँ, वो 110 75 पे, क्या करें यार। वेंसडे सर, एस वेंसडे। हाँ, सारे अकाउंट वो हमारा 9th डे ना हो जाए। एनवीडिया आ रही है जी, 121 पे आ गई। एनवीडिया की अर्निंग में कुछ नहीं करना जी, चुप करके देखना है। और अगले दिन 9:30, नहीं अगले दिन 9:30 जहाँ से भी है सेल कर देना। अगर ऊपर के नीचे गई तो बाय। ये प्लान है जी एनवीडिया की अर्निंग का। 9:30 पे जो भी मार्केट, वो आपकी करेक्शन शुरू हो जाती है। हाँ, 15 मिनी से। दो ट्रेड 20 पॉइंट। लो जी, कितना टाइम रह गया जी? 13 और 5, 20 मिनट और हम आपके साथ हैं जी। लिख के जा रहे हैं इवनिंग। हाँ, हूँ कोई ट्रेड नहीं है जी। खोल ले, क्लोज क्लोज, उत्तम मैं उत्तम भी कर लूँगा। एक अकाउंट पढ़ लेने, एन नैनो कटिए। नहीं प्राइस थे। हाँ टेस्टिंग है ना, देखो NNQ लग गया ना। NNQ ये प्राइस चल रही है NNQ। देखो लोगों ने 100 लॉट पाए ने, क्योंकि पूरा पंद है ना। हुण तुसी कह रहे हो प्लस ते चार्ट। NNQ हेलो चार्ट। नहीं सेम है। नहीं वो अपना तुसी चार्ट किदा कन्फिगर करना है। ये देखो ना, चार्ट कन्फिगर ऑप्शंस, SMA लानी है, RSA लानी है, बुलिंजर लाना है। ये देखो ना, टूल्स, बार, स्टॉप टाइप, रोल, ट्रेड मोड। ये देखो ना, अच्छा चार्ट दे होते हैं, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल सही। Alright जी, let's see what happens next। अगर सेल करना ही है तो 173 से पहले नहीं जी, हमारा इक्वल हाई।
मैं लब लेना है मैं ओ देखो स्पाइक आई थी 100 में बैठा था 22 पॉइंट की स्पाइक आई 29,173 है इक्वल हाई इक्वल हाई पड़ रहा है 172 पे जी एशिया लो कब दोबारा आ गया 116 पे Let's see. 234 से 113 एशिया लो तोड़ गया वन ऑफ थ्री वन सेवन थ्री 100 पे आ गई अगर मज भाई मैंने ये लिया होता ना हाँ जी ऑलमोस्ट 4:05 पे बंद करूँगा
बस ऑलमोस्ट देयर। आ गई थोड़ा सा एकदम 100 से ले गए हैं। और वो लुक एट दिस मैन, देखा 100 से 122, 122 से 100 एक मिनट में 98, 94। आजा नीचे आजा, 100 पॉइंट और आजा, 28,000। नहीं अभी नीचे बहुत पड़ा। $28,910, 28,950 माइनस 29, 105। अभी 155 पॉइंट रहती है। ये एंड पे मरते मरते झटके दे रही है। नहीं कुछ नहीं करना, चुप करके बैठ जाए नंबर पे, बस दैट्स। फिर दुआ करते रहोगे इत्थों निकलेगी इत्थों। ओहो फिर ले गए वापस 94 से 123। उनका बहुत कुछ ਹੁੰਦਾ। नो जी 3 ਤੇ 5 8 ਮਿੰਟ 8 more minutes कि मैं ना 4 बजे टपाना है। हाँ आज 4 बजे वाली कैंडल 1 मिनट रह गया। 5 15 30 60 all about to। देखो सर 10 बजे तो बाद ना वो हिली ही नहीं, रेंज ही नहीं बनी। यस वैसे वैसे ना S2 छड़ता सी, मीनिंग के आई सेड नो, ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाए।
All right, 4 o'clock is done. Let's see which way it goes. पाँच मिनट माजिद भाई, that's it. नहीं मैं वैसे ही कह रहे, मैं थक गया. मंडे वैसे भी ना ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ मेरे तेरे हफ्ते उठना मैं बड़ी फोटो पाई मैं तो कल भी इधर से 4 4:30 5 बजे गया बहुत मत जी. कितना रोज छदाई है कितना छे तक लेट कर अंतर को करेंगे आधी से पहले कभी 1 बजे फोन कर से फिर मैं कभी लेट करेंगे 10 बजे All right, guys. I think this is not gonna go anywhere. Just grab the numbers. 350 का वेट कर लें, 910 और फिर 750. I believe evening के एरिया यही आनी है, 750 से 700 तक आनी है. Let's see. Four more minutes. छः बज के 6 hours 50 minutes से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. So मैं वैसे कोई डांस करके नहीं कर रहा, बैठे कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉन स्टॉप टॉकिंग. मजा आ गया. Hey brother, how are you? उनको लगता है वो एक चलो किसी का फायदा हो जाए तो हमें और क्या चाहिए. जब आपकी आवाज बंद हुई थी ना, मैं तो घर था, मुझे किसी का मैसेज आया, मैंने एकदम से फोन किया. अच्छा मैं क्योंकि होता ही है कि ये जो माइक्स है ना वायरलेस, इनकी बैटरी लाइफ है 4 hours. अब मैं करना भी शुरू कर दिया पागलों की तरह. इक्वल हाई का वेट कर लीजिएगा. अगर अभी बहुत ज़रूरत से ट्रेड आ गया, जल्दी आ गया, आपको बहुत ट्रेड आ भी गया है तो 145 से पहले नहीं, क्योंकि 95 से आ रही है तो 48 पॉइंट का 50% मिनिमम 140 से पहले इक्वल हाइस. व्हाट्स इक्वल हाई? लेट मी डायग्राम. ये आपका इक्वल हाई है जी. दिस इज इक्वल हाई, इक्वल लो, मिड एंड इट्स कमिंग फ्रॉम एक मिड बैंड ये चला, एक मिड बैंड ये चला,
इंटरेस्टिंग। अब हम किस चीज़ का वेट करें? हम वेट करेंगे यहाँ पर पिवट का 350 पे, कि अगर यहाँ से 110 से 350 आती है, क्योंकि आज पूरा दिन पिवट से नीचे रही है और R1 पे भी नहीं गई, सो R2 नथिंग लाइक दिस। सो मैं नीचे की तरफ गई, हमारा नंबर था ये नहीं पिवट दे कॉल आ गई सी एक बारी, हाँ है तो गल, हाँ केड़ा सारे भाई 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 केड़ा सारे पहले मैं ये मिनी पे करता था सर, मैं भी करता जी, पर मैं आज नहीं कीता, कल नहीं कीता, आज नहीं, क्योंकि उन्हें 2 दिन मौका नहीं देता, फ्राइडे भी नहीं मौका देता था लेने के लिए, रीप्लेस करे, एडजस्ट करे। सेवन मिनट्स और 10-15 मिनट तो वैसे ही इसमें लग जाएंगे। मैं सर देख रहा हूँ कि अच्छा वो किस चीज पे ट्रेड करते हैं? CFD एंड मेटा पे, MD5 पे, अकाउंट फंडेड अकाउंट कैसे? नहीं फंड कैश पे, मुझे सबसे फनी पता कौन लगता है? वो एक आता है, वो कहता है आपका कितना लॉस हुआ है जी, कितना लॉस हुआ है, अभी आपका लॉस बुक कराऊं जी, क्या आप लीडर बोर्ड पे कितना लॉस हो रहा है जी, $1300। अब क्या यार तेरे को की चीज़ आ गई, आपका 3000 रिकवर हो गया जी। और मैं क्या खुदा था ना की तेरे को, मैं क्या मैं अपना अकाउंट देना, तू मेरा रिकवर कर। नहीं ChatGPT भी क्या करेगी आपके लिए? मैंने कल ही देखा ही। हाँ मैं इतने में लगे होते हैं हम, लीडर बोर्ड पे ये आ गया जी, पता नहीं होना, ये देखिए अच्छा जिस वक्त वहीं से ट्रेड मारता है, पता नहीं क्या करते हैं। ये हो गया जी आपका। वो कर देगा ना प्लेबैक, इस टाइम पे क्यों है प्लेबैक में रिकवरी करा रहा है। हाँ मैन, कम ऑन मैन, 122 पे 5 मिनट और तो मेरी होगी बस, आई एम डन। नौ 910 पे लगेगी डाइवर्जेंस और यहाँ से मुझे देगी 25 पॉइंट, वो लेके मैं फिर नीचे 750 पे ऑर्डर लगा के सो जाऊंगा। सुबह उठूंगा तो इतना मगरमच्छ फंसा होगा। The king of bankruptcies. अब शुरू होगी, कितनी बात आ रही है। इसने कहा ईरान के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पंगा करो। होम्योपैथिक ही है, कुछ नहीं मिलना।
Why am I still online? Because my counter is saying 6 hour 57 minutes and YouTube algorithm likes 7. I mean, number of hours. So हाँ नहीं देखें आज 9 की है ना, तो पूरे 3 मिनट के बाद मेरे 7 आवर्स यूट्यूब पे लिस्ट हो जाएंगे. क्यों? हाँ तो मेरे साथ ये हुआ ना जिस दिन निंजा फ्रीज हुआ है. मैं 2 मिनट नंबर से 190 आ गया 2 माइक्रो वो करते फिर 5 रुपए यार वो मैं बाद में आया तो हॉटस्पॉट बंद करके ऑन करके फिर ट्रेड कर मैं चल के जा के बना बड़ी बात है नहीं करी दी तो पे ना लगी जा रहा लगी हां जी तो चली मैं दवा देना जब पूरा मेरे को बंद करके पता नहीं चलेगा अब वैल्यूएशन करना FOMC आएगी, एनवीडिया वाले दिन मज़ा आएगा, तेरा तेज होगा काम. वेंसडे को 6:59:36. All right, guys. See you tomorrow. Have a great night ahead.